बॉडी हमने तुम्हारे कुर्ते के साथ मैच कर दी और तुम इधर उधर भागे जा रही हो। हाँ तो नाक पोंछ के टिश्यूज भी खत्म हो गए। I don't know who sits here. You will sit here. I don't care. You sit here. मिलना भी बता दूँ तुम्हें। एंकर करती करती आवाज मार दूँगी। आराम से बैठिए। कर दीजिए वो पोस्टर लगा उनको बोल दो ज्वाइन कर ले। बोल दो। कौन है ऑनलाइन? प्रोफेसर इश्तियाक। सलीम मिश्रा भी नहीं आ रहे हैं इसमें HBC वैलिडिटी में ना चेयर था ना तो सलीम मिश्रा सर का नहीं आ रही। इज नॉट कमिंग लेकिन सर ने मुझे कल इन्फॉर्म किया था बट वेरीफाइड विश मैम इज कमिंग। एक और थे इसमें जो ऑनलाइन थे बलबीर मधुपुरनी का तो हो चुका होगा फर्स्ट। Good afternoon, sir. Can you hear me? Sir, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. But you have a lot of echo at your end. There's a lot of echo at your end. Okay. So is it still echoing? Sorry, say it again. Is an echo still there? Hello. So is it better now?
There is still an echo, but I can hear you. It's improved. It's improved. So when the sequence starts, they will mute the ambient sound, and I guess by then it will be all right. Hopefully, hopefully, yes, hopefully. Rethinking. In two ways. I as a can't hear you.
Sure. I can't hear. And Partition University Italia. Thank you so much for joining us this afternoon. The session is a session dedicated to these two stalwart speakers, Professor Ishtiaq Ahmed and Padma University Italia. Professor Ishtiaq Ahmed is a Swedish political scientist of Pakistani descent. He's a professor emeritus at Stockholm University, which is also his alma mater. He may not technically qualify to be a midnight child, but he's a cohort of the same, as he was born in 1947. He's a prolific, erudite scholar and has written on various aspects of the South Asian geopolitics. His work spans a award-winning account of the partition, the Punjab, Bloody, Partition, and Cleanse. There has also been fiction that he's written, which is Punjab Ka Batwara, Ek Almiya, Hazar Dastane. We are honored, sir, that you have decided to heed to our request and spare your time to share this wondrous journey that you have had in life
with us. May I again welcome Professor Ishtiaq Ahmed and invite him to give his address. The session is a tightly packed session, sir. So I would request you to stick to the time limit of about 25 minutes. May I now request the principal to please honor virtually Professor Ishtiaq Ahmed. And sir, we honor you virtually because the distance does not permit us to do so physically. I extend a very, very hearty welcome to you. You have joined online, and it's our honor that you are here. Thank you, sir, for joining. Request Principal Professor Harpreet Kaur to honor Professor Urvashi Butalia, who is here with us in person. Sir, I hand over the platform to you, Professor Ishtiaq Ahmed. Thank you very much. I would like to begin by thanking from the bottom of my heart Mata Sundari College for Women, Delhi. Hopefully, when I come next time, I would like to come there personally and talk to my colleagues and the students. But science has its ways of helping us connect despite all the politics and the COVID scourge that hit us. If I understand correctly, I mean, the ceremonies have started in English, but I was advised to speak in Punjabi, which I would like to do if that is permissible and if everybody is agreed, then whatever makes you comfortable, we are comfortable with everything. The comfortable to ye hai ki ji, I've always been doing it in English. So there are students here who would understand Punjabi, Hindi also. So bilingual would be the best way to go. ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी. So revisiting the partition, there are two ways that I thought I could express my views about it. One is partition as an idea, as a process, as politics, and its consequences. The second is my own engagement with partition as a scholar. If the methodology and the approach I adopted to study it, revisiting it now after all these years, what do we learn? So I'll combine both. बात ये है कि partition के साथ मैं अपने बचपन से लाहौर में टेम्पल रोड लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ 24 ਫਰਵਰੀ 1947 ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਔਨਵਰਡਸ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਈ ਮਦਰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ she was looking out of the window on Temple Road and she noticed ke to her right ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸਨ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ so Lahore was burning, simple as that. And she noticed that from the left, while she was looking on Temple Road, a Sikh
big burly Sikh came on a motorbike, and as he came close to the square where all the roughnecks were standing, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। That Sardar ji pulled out a gun and fired, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਲਫੰਗੇ ਸਨ, ਗੁੰਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। This is usually the case, you know, and so he could pass safely. ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। Women apparently seem to have that more than men. She kept on looking out on Temple Road, and she noticed that again from the left, on a dingy old bike, came a Sikh carpenter with the portly, you know, the daily food that workers have when they go to work. ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹਿਸ ਵਰਕ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਟੈਂਪਲ ਰੋਡ ਦੇ, ਤੇ these people pounced upon him, killed him mercilessly. My mother died in February 1990 in Stockholm. And I remember till the very end, this trauma lived with her. So in a way, she passed it on to me. Simultaneously, one would remember that in front of our house, in a shop, lived a man who every evening would start cursing in the worst type of abuses the world around him, and you know, the rascals, the scoundrels, the boys, you know, would go knock at his door and then run away. And later on, I learned that this man belonged to somewhere in Haryana. He had married late, and his wife had died ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ. So he had brought up this child of his, a boy, and in 47 that boy was killed in front of him mercilessly. So he had just lost the balance. So here I had experiences, one of my mother's trauma with this Sikh who was killed in front of her, and this man shattered by the experiences, the nasty experience of partition. So revisiting partition means what? ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਿਹੱਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? Was it good? I think that's one question people would like to ask. So when I wanted to study this, while at Stockholm University, something very similar happened, and that was the collapse of Yugoslavia and the communities there fighting one another. So I had, while as a grown-up professor at Stockholm University, in front of my eyes, this tragedy taking place. And then in my own baggage of memories, the partition. So those are ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਰਿਸਰਚ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸੇ to do the research, which I am very grateful for. The problem now was that if you wanted to go the traditional, conventional way, कि जाके गवर्नमेंट ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਆਰਕਾਈਵਸ, ਇਹ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਫਟਰ 14th August 1947. Punjab Governor reports and the Chief Secretary's reports, these are the major ones. Up until then, you can find them and work on them, and then there is nothing beyond that. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ UK ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਂਡ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ and so on.
ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸਰਸ ਕਦੀ ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਵਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੋ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, मैडम उर्शी बटालिया और रीतू मेनन और कमला बसीन और ने एक नया पर्सपेक्टिव दिता बाय गोइंग एंड टॉकिंग टू women uprooted during the partition, mostly from Rawalpindi, or oral histories received, I think, a respectability that conventional historians deny them. But I was not interested only in the experience of a small group of people, but what happened to the whole of Punjab. Oh, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ambition ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ you want to explain it not only, you know, from the point of view of a community or a group of people, a region, but the totality of it. So I had to do it as a political scientist. It was very clear to me ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਵੇ ਕਿ if there was no partition of India, there would be no partition of Punjab. Simple as that. But logically it doesn't follow that if there were the partition of India, Punjab must be partitioned. So ਦੋਨੋਂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ you had to explain why Punjab went the way it did. But it would not have done that were it not for the demand that ਤੁਸੀਂ India ਦੀ partition ਕਰੋ. So that was one thing I had in mind. Then as a leftist from early times, I had read how progressive writers, you name them, Manto, Krishan Chandra, Rajinder Singh Bedi, Balwant Singh, Khushwant Singh, Ahmad Nadeem Qasmi, Ashfaq Ahmed, you know, some of them later on became right-wing people. But one of the greatest come jada hai, partition the tragedy there, because I think it transcended all those prejudices and hit humanity at its worst, the debasement of humanity. But there, as I said, there was no research to follow on. So I combined these 3-4 levels. I had to look at what London was doing, what Delhi was doing, what was happening in Punjab, which was my own part of the world, and then in Punjab at the level of the administration as well as at the level of people. So after having done that work, what I've noticed is that it's almost daily, even now, after all these years, ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਖਾਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। So that book has then gone on to become what I was told recently in Boston by an Indian young Punjabi girl, Vijeta Saini, ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਆਫ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ that's a recognition I would always cherish a lot. So that's how I did my research, combining the 4 levels. Coming back now to the main question, partition and as an argument. ਦੇਖੋ ਜੀ partition ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ 19th century the second half to shuru ho janda hai, and you can find people on both sides doing it. When I say both sides, I mean primarily Hindus and Muslims. Problem hai ve ke oh blame game de which one do you want to name first? And I don't think it's worth trying to identify the first culprit. It seems it happened more or less at the same time. This idea was going around without the British, the Muslims would come back and maybe dominate us. So let's drive them out of India, or at least west of the Indus. This was the Hindu point of view. और मुसलमाना दा ऐ सी कि सानू साडे कोलों पावर लई गई है, we want to come back and establish an Islamic state. और 1917 ਵਿੱਚ
in Stockholm, where I live, at the first international, there was a meeting that थे दो दिल्ली तो भरा गए सन खेरी ब्रदर्स जिन्हां ने आइडिया पेश किया सी कि इंडिया पार्टीशन हो जाए और एक इस्लामिक स्टेट भी किधर बन जाए. So this idea had been around for a while. You have Sir Syed on the one hand, and then in Bengal, 1858, Professor Partha Ghosh, a friend of mine, उन्होंने notice किया है कि there was this fellow Gangopade. ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ pronounce ਕਰਨਾ, so I dare not, ਕਿ he also proposed, or he also was in favor of a partition, or at least damning Muslims just as Sir Syed would damn Hindus, that sort of thing. So one can go back in time. But how does then an idea become the centerpiece of politics? That's the main question. And I think it has a lot to do with the clashing ideas of nationalism. Nationalism ਦੇ 3-4 ideas ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ. ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ Indian National Congress ਦਾ novel idea ਕਿ anybody who lives in the Indian subcontinent is an Indian and therefore a member of the nation. Or we can call it the French model of nationalism, where territoriality defines your national status. And it was inclusive, and it was also a pluralist in its orientation. And I think the best example of that is the Nehru report of 1928, where it is declared that there will be no state religion of India. Men and women will have equal rights. India will be a strong federation with a strong center, which makes a lot of sense. Anybody who has any clue of what is politics and the modern state cannot deny that without an effective center, there is no state to run. So that was a perfectly legitimate, reasonable, workable, doable framework that the Nehru report had proposed. And remember, कि ਉਹ Nehru report ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ. All the communist parties and their variations, all the communal parties and their variations, the main parties, Muslim League, Akali Dal, everybody was, Akali Dal 1928 is, yes, by that time they were already there. So all had been interested, been invited, but the Muslim League under Jinnah had boycotted, but not all factions of the Muslim League. When the Nehru report was finally, agreed, I have given evidence कि एक पूरा section, खास तौर पे पंजाब दे और मुसलमाना दा जिहड़ा खिलाफत मूवमेंट इच इन्वॉल्व सन और हमेशा इंडियन फ्रीडम दे नाल ओ रहे ने, they were in favor of accepting the Nehru report. लेकिन उत्थे फिर उस दिन जदों ਇਹ डिस्कशन हो रही सी, गुंडे आए और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ. Jinnah Sahab came along with others and the Nehru report was rejected. Then the Muslim League's point of view had evolved that India is not one nation. India is a composite sort of, political entity in which there are many nationalities. Among nationalities, they would include Hindus, Muslims, Sikhs, Dalits, and South Indian Dravidians. So, one of the categorization. So, these were the competing ideas. Then comes the turning point, and that makes the Indian historians very uncomfortable when I say this. Okay, 1935 Act is introduced. The electorate is expanded, but still confined to about 10-11% of the population. So, not everybody got the right to vote. But more people got the right to vote than they ever did in the past. Or ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ provincial elections ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, provincial elections ਵਿੱਚ
the Congress does very well in the Hindu majority provinces. In the Northwest Frontier province, the Khudai Khidmatgar, who are allies of the Congress, are also returned in a complete manner. The Muslim League doesn't get a single seat in the northwestern Muslim provinces, Muslim majority provinces. Punjab ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ province ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 37 election ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਕਮਿਊਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਸਪੋਰਟ, ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ। The last speaker of Punjab Assembly was SP Singha, a Punjabi Christian. Just for your information, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ cousin ਹੈ SP Singha ਦੀ, Bona Singha, later on known as Kalpana Karthik, was Devanand's wife. ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ। So I thought I'll add a little more to who did what and how. So the Punjab Unionist Party triumphed in Punjab. Muslim League ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ because one of the characters, Raja Ghazanfar Ali Khan, crossed the floor and joined the Punjab Unionist Party. In Sindh, not a single seat. Allah Baksh Sumru ਜਿਹੜੇ ਸਨ Ittihad Party, Unity Party, they triumphed in Sindh. So then the 37 election proves that the Muslims are not with the Muslim League, according to any rational, any reasonable estimation. But I think the Congress had made some excessive sort of statements. Well-intended, very progressive, admirable, but something which came to haunt them. Jawaharlal Nehru ne 1936 ਵਿੱਚ declare ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ will be abolished in a free India, ਔਰ Soviet Union ਦੇ image ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ socialist ਮੁਲਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ. So I think this disturbed not only the land owners, but also the British, who had a pathological hatred of the Russians. And you can see now the Ukraine war and its consequences. It keeps coming back, these sort of things, which after 1917 and the Russian Revolution probably became 10 times worse. So any idea that India would become a socialist ally of the Soviet Union, I think was anathema to many people in the subcontinent. So at that point, I think Jinnah could be admired or he could be, demonized depending on your point of view. He took up the challenge and said, no, we will not let the Congress rule us. Or ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ 1937 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 39 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ 2 ਰਿਪੋਰਟਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੀਰਪੁਰ ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਡ the Sharif report, alleging massive injustices meted out to the Muslims. The thing is that this was all propaganda, maybe some substance, but most of it was exaggeration, twisting of facts. And who else but the Viceroy of India, who was allied to the Muslim League after the Second World War, Lord Lithgow, is on record saying that there is no substance in this. And when I meet Jinnah, I'll tell him. The 3-4 governors of, the Muslim majority, Hindu majority provinces where Congress governments were formed, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ reports ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, there is no evidence that Congress ministries are oppressing the Muslims. But once an idea is born and somebody can somehow popularize it, it catches the fancy, it generates fear, and so on and so forth. And
So out of it then comes the Muslim League's ideological stand on the 22nd. You know, people talk about 23rd March 1940 Lahore resolution. I think that's not so important as the marathon speech that Jinnah made on 22nd March, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ hostile, inimical, irreconcilable nations prove ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਰਗੂ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਲਕ ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ because nothing is shared by Hindus and Muslims. And so the 23rd March resolution passed on the 24th demanding ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ majority ਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੇ Muslim states ਬਣਾਓ generically called Pakistan. And let me put it on record that on 1 week later, just a week later after this resolution, Sardar Sundar Singh Majithia of the Sikh Nationalist Party is on record saying that we will not let, if Muslims do not accept India as their homeland, then we will ensure that we are not placed in an Islamic Pakistan. So then if you look at the argument of the partition developing, you have the Congress holding on to the idea of a united India, the Muslim League demanding the partition of India on a religious basis, and that being confronted by the Sikh leadership, because a few weeks later, Master Tara Singh came out in support of this idea as well. कि पंजाब ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ partition ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ if India is partitioned on a religious basis. Jinnah went on further. He told the people in the south कि ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ Dravidian state demand ਕਰੋ ਤੇ I will even support that. And there are people like Chaudhry Rahmat Ali, who actually coined the word Pakistan, who came up with ideas ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ Muslim states ਬਣਨ. And he named those states about after the holy figures of Islam. The Prophet Muhammad ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਉਮਰ, ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ states ਵੀ ਬਣਾ ਛੱਡੀਆਂ. And then so on and so forth. So balkanization of India was also on the. Now in such a situation, you can well imagine that while Muslims are told, and Jinnah is on record saying that in a united India, and this is on the 8th of March 1944, that in a united India, Islam will be annihilated. Islam बिल्कुल खत्म हो जाएगा जे united India रहा. और then he continues harping on that and he even says कि the Muslims will be obliterated. यानी एक मुसलमान भी नहीं बचेगा एक united India. So this way the mobilization of Muslim begins for a Pakistan where they will be safe from alleged hatred which Congress represented, Hindu Raj, so on and so forth. Whereas the evidence shows that Congress is koi aisi na policy shuru si na baad vich hoyi jade cho communal basis te koi state banana chahnde san. Here, since we have some leftists also around, let me tell you a blunder which the Communist Party of India committed on this. You know, normally the communists have been frontline vanguard for anti-imperialist struggles and so on and so forth. And until about 1942-41, they considered the Second World War just an imperialist war between Germany, who wanted colonies, and the British and the French, who wanted to hold on to their colonies, and said that we have got nothing to do with it.
But then when the Nazis attacked the Soviet Union, because of their internationalism, everywhere in the world, the communists started calling it a people's war. Or India, which for the first time, the Communist Party of India was, given legal status. Of course, it had existed earlier, लेकिन छापे पहनते सन, लोगों ਨੂੰ अंदर कर देंदे सन, और बड़ा बुरी तरह treat करते सन. But now they became allies of the British. And then you have the Adhikari thesis, which I think is very questionable. He says that oppressed nationalities in India have the right to self-determination, including the right to form their own states. And if you look at the list that he elaborates, it includes Hindis, Gujaratis, Bengalis, UPites, Maharashtrians, and you name them, and all are defined there in terms of their linguistic features. But coming to Punjab, the Adhikari thesis identifies the Sikhs and Muslims as oppressed nationalities. Now, that makes no sense to me. If it does to anyone among my colleagues, I would like to discuss that, because there could have been a category known as oppressed Punjabis if an argument could be made. But when you come to Punjab, you forget that 29% of the population was Hindu. The Sikhs were only 13.2%, and the Muslims were 57.1%. So two nationalities are oppressed and entitled to the right of self-determination. And I have said that actually this was a convoluted argument to support the Muslim League. और एक और गल भी इत्थे दस दियां कि because we are revisiting partition and the left's own blunders have to be taken into account as well. They also had a position that the Indian National Congress, based on this non-violent ideology of Mahatma Gandhi, would always obstruct a socialist revolution. And I don't know how they came to this understanding that in Pakistan, somehow a radical type of state could be formed which would go forward with socialism. So the idea of Islamic socialism was suggested by the leftists who joined the Muslim League. And then, of course, I mean, I'm cutting short because I know it's about 30 minutes in which I have to do it. Balkanization of India, I have given the argument. Partition as a process. The partition as a process, I think, has different features. I will only concentrate on the following, that what was the British intention? What were they aiming all along? I've quoted in 1943, Lord Wavell, the second last viceroy, saying that he was told by the outgoing viceroy, Lord Linlithgow, that we are here for another 30 years. Now, another 30 years would have been 1973. And this is when the Second World War was going on. So the British had no intention of leaving India. But the hand was forced by the fact that jang te unhone jit layi, but British economy was in tatters. There was a food shortage, and the British were heavily under debt, almost insolvent to the Americans. Or American pressure, see, that you leave India now. The Americans, by the way, wanted India united. So we have to understand why the partition happened, and then what's the argument. So I would say partition as a process then has a number of stages, where the British intention is somehow to hold on to India under defense treaty, and they come up with the cabinet mission plan. The cabinet mission plan
proposes a loose federation with most powers vested in the provinces and the center given only defense, foreign affairs, and communications. And no original rights to taxes had to come from the provinces. Now, that's an ineffective center. And it also included a clause that every 10 years, they created three groups, A, B, and C. Group A was Hindu majority provinces. Group B was Muslim majority provinces. By the way, in the B group, the Sikhs of Punjab are on record saying we don't want to be part in Group B. We don't want to be part of any Muslim-dominated Group B. And as well as the Northwest Frontier, Khudai Khidmatgar saying we don't want Group B. Group C was Bengal. And the idea was that every 10 years, these three groups could individually decide to leave the federation, or the provinces, one by one, if they wanted, could also leave the federation. The third component was the princely states. The princely states only gave up defense and foreign affairs and retained all those, powers of autonomy, yes, which they enjoyed under British rule. So, in हालात दे विच किया जाता है जी कि कांग्रेस ने by refusing Aisha Jalal da thesis है, and she forgets all those hundreds of speeches Jinnah made after 22nd March 1947, where repeatedly ad infinitum Jinnah says we want partition, no question of power sharing, we can't live with Hindus, and so on and so forth. Anyhow, the Congress said we will not accept this framework, but a part of the cabinet mission plan was then what is known as the Constituent Assembly, that the members will go there and make a constitution for India. They said we will join the Constituent Assembly, but we will not accept the cabinet mission plan as a framework for a loose, united India with most powers vested in the center. They said that's not workable. The Muslim League accepted the cabinet mission plan's administrative parts, but said that they will not join the Constituent Assembly to make a constitution for united India. If you keep all this in mind, then at the level of the high politics, I don't find any willingness to compromise on both sides. And I think especially I would blame the Muslim League and Muhammad Ali Jinnah, because during 1937-39, there is abundant correspondence between Jinnah and the Congress leaders. For example, I'll give you one letter which in 1938, Subhash Chandra Bose wrote to Jinnah Sahab, saying that we do accept that the Muslim League is a major party of the Muslims, but it's not the only party. Haji, there are other Muslim parties. Jamiyat Ulama Hind is there. There is the Khudai Khidmatgar and the Majlis-e-Arar and so on. So we can't accept that the Muslim League is the only representative party of the Muslims. Sorry. I'm sorry, Right. I would ask you to conclude. It's a humble request to conclude as we are running short of. I knew this problem will crop up, and Yes. if you give me about 7 minutes, I'll finish. हाँ जी, My apologies, sir. 7 minutes दियो ना जी मैंने, क्योंकि it's such a vast subject, and I don't know how one can revisit partition in such a short period of time. An hour is needed at least. Anyhow, thank you so much. So I would say that if you look at the positions taken, this doesn't augur well for a peaceful transfer of power. In the end,
and I think this is important, who then decided for the partition? The British still had the final say. They could have overruled Jinnah, they could have overruled Gandhi and the Indian National Congress and Nehru and the rest. But what do they do in the end? In the end, they decide that India will be partitioned, but so would be the two provinces of Muslim majority provinces of Bengal and Punjab. And the process was that Punjab and Bengal Assembly were to vote on this. They were split into two groups, Hindu majority districts and Muslim majority districts. In Bengal and in Punjab, 12 Hindu Sikh majority districts and 17 Muslim majority provinces. If either voted for partition, there would be a partition. And they did vote for the partition. But from March 1947, Punjab was already, in the grip of escalating communal violence. And Jinnah Sahib met the Sikh leaders on the 15th and 16th of May and proposed to them that if you agree to be in Pakistan, we will give you all the freedoms you want. But the Sikh leadership rejected that because in March 1947, when the Sikhs were encircled and killed in large numbers, I've shown in my book on the Punjab partition, not a single Muslim League leader went there or even issued a statement showing sympathy and so on. So I think the Sikh leadership had no faith in the Muslim League. Of course, the problem is I'll end here, that one of the Sikh demands was to have a Khalistan. But why could not Khalistan be granted? The answer is because the Sikhs were nowhere in a majority anywhere in Punjab, not even in a single district. So if at all there could be a Sikh state, it would have been in the 3-4 princely states, Patiala, Kapurthala, and a few others. The end result was a partition which claimed the lives of 1 million Hindus, Muslims, and Sikhs. And 10 million Punjabis had to run for their lives to cross the border, and altogether 14 to 15 million people had to cross the Red Cliff line between India and Pakistan. So revisiting partition for me is that, did the partition resolve what is known as the communal problem? I don't think so, because the communal argument then becomes the basis for an Islamic Pakistan which isolates the minorities. And in India, where a secular state was founded, over time, the Hindu right kept on arguing that if the partition was agreed because Hindus and Muslims were two nations, then what are Muslims doing in India? That sort of argument has now become a major, argument for creating a Hindu vote bank and especially targeting Muslims in India. So for me, the partition didn't resolve the issue it claimed it would, and that is to bring communalism to an end and create peace between India and Pakistan, or peace within India and Pakistan between the different communities. Thank you very much. I think I'll stop here. Because of constraints of time, we had to cut short that which we would have loved to hear, and that is the precise reason it is important to revisit this partition, because as the temporal space between the events increases, perceptions will tend to become even more colored today than they were. With this, I extend, I'm very, very grateful to you. And I now, as a representative of
women my age who were raised on the feminism that you, Madam, heralded, I feel honored to invite Padam Shri Urvashi Butalia to deliver the valedictory. Help but marvel at how progressive a family she came from, where her mother started a counseling center for women years ago. Her name will always be symbolically remembered for the celebrating voice of Indian women writers. A rare combination of an activist and a scholar, Urvashi Butalia has contributed in multiple ways and to multiple causes. Her book, The Other Side of Silence, has been quoted and is hailed, and it was just hailed by Peter as a watershed document in oral history, which gave oral history the respect it deserved but seldom got. I close with a prayer for your continued contribution to making unheard voices audible. Padma Shri Urvashi Butalia. मेरी आवाज आ रही है? सत श्री अकाल कुड़ियों and some men who are here. Thank you, Mata Sindhi College, for inviting me. सारे लोग की थके मांदे होंगे, रोटी राटी खा ली है, नींद जवेला है, जो हम सब को सुनने पड़ रहे हैं. पूरे वास्ते apologies. I'll try very hard to keep it short. But थक जाओगे ना, बोर हो जाओगे तो इतना हाथ करने लग जाना. तो मैंने पता चल जाएगा, then I can actually cut down. Okay, so thank you so much for inviting me. You know, in some ways I feel a bit of an intruder here because मेरा जो partition करते कम से कम कोई 20-22 साल हो गए. So it's like there has been so much work since then that who am I to stop in here? And yet in some ways what happens is with partition, if you enter this subject, and especially if you enter it from a personal involvement like I did. So my family, as some of you might have read my work, will know that my family was also a partition refugee family. Both my parents were refugees separately. But my mother's brother stayed behind in Pakistan and he got my grandmother back and he chose to convert and became a Muslim. And it caused a huge cleavage in the family, which till I was 30 years old, I had no idea of really. So how much also all of us ignore the presence of partition. So basically what happens with somebody like me, as I said, I feel a bit of an imposter, is that the thing that remains or connects, keeps on connecting me to partition is even though my research work is now 30 years old, my book came out 22 years back, partition has not left me. You know, in some ways, there is no question of revisiting. I am there. It doesn't go away. The stories keep coming. They enter my head. They enter my heart. They stay with me. And sometimes I can laugh about them and I can say I've become like the partition lady. You know, in some stories from the West, you might have heard of these women who are bag ladies. They are poor women who have nowhere to live, but they have possessions. They carry their possessions in plastic bags with them and they sleep in parks. And I sometimes feel like that about partition. That वो जेरी कहानियाँ हैं क्या, लोगों की कहानियाँ, वो अंधियाँ रहती हैं, वो मेरे दिल में चाह जाती हैं, मेरे सिर में चाह जाती हैं, they don't leave me. So today I'm going to speak about only one of those stories. But before I do that, I want to do a quick recap of what I think are really significant developments in the work on partition, and I'm going to look at my phone and keep time. So also मैं थोड़ी बुढ़ी हो गई हैं तो जब हम गाल करनी होती है ना इस तरह ही गाल नहीं होती है लिखना पड़ता है. So I've written down what I have to say. I'll try not to be reading it all the time, but sometimes I have to have some resistance to my memory that's fading a bit. So about a month ago, I was invited to speak at a discussion on partition in Bangalore. The participants included a writer, an artist, and a filmmaker. The filmmaker, interestingly, was from Bengal and is the third generation of a partition family. And she told the story of her grandfather,
who was so upset when partition was announced, and he was a follower of Gandhi, that in protest against the partition, he discarded all his khadi clothes and threw them symbolically in the river Pavna near their house. And he never ever again wore khadi. This young woman, who is in her late 20s, inherited this history, did not really know about it till she became aware of partition, and then it became the work that inspired her art in very, very deep ways, and that kept sending her back to partition to look for other stories from the family. Now, the reason I mention this is that even though the first generation of partition survivors among us has mostly gone, there are hardly any people who remain who have lucid memories of that time, generationally the history still live on in people's work, in their homes, in their memories. The same discussion, I met another woman who was a filmmaker, who was slightly older than this young Bengali woman. The filmmaker had set out to make a film on her father, who was a hockey player. And she wanted to make this film as a tribute to her father, who was part of Undivided India's hockey team that later, after partition, went on to win the gold medal at the Olympics. In the process of making the film, Bani, that is her name, she found herself tracing her father's journey from Punjab to Bengal to Pakistan, and found, interestingly, that everywhere she sought the story of sport, she found the story of partition. And her film, father as a hockey player, but a film about partition told through the prism of support. So this is the ways in which this moment in our history stays with us. These two examples are a very small fragment of the rich research and writing on partition that we're seeing today. The early concern that most research was focused only on Punjab and Bengal no longer stands, because now we don't only have studies on Bengal and Bangladesh, but work on partition is exploring many other dimensions. One of them is the spatial dimension, something that was missing earlier and certainly missing in my work, for example. So we see now how partition takes us across a much wider geography than just Punjab and Bengal. We can see its impact in the new studies that are coming out in the Andamans, in Bangalore, Mysore, Kerala, Khasi Hills, Ladakh, the entire northeastern region in Gujarat, in Jharkhand, in Chhattisgarh, and so much more. And each of these histories opens up something new. In a book that I edited some time ago, a Ladakhi Muslim man called Siddiq Wahid traces the history of his family. And Siddiq's family's history is as follows, that for centuries they were tasked with the responsibility of collecting the contributions that people made to the Dalai Lama and then taking it across from Ladakh to China and crossing Gilgit and crossing various other places. And these journeys took them months, sometimes as long as 6 months. They stopped along the way, they made families, they married again, they had children there. And suddenly with the coming of partition, something that was not expected at all, this entire large geopolitical spatial world of the Ladakhi Muslims and the Ladakhi Buddhists reduced to a small state inside Jammu and Kashmir. And later, as we know, recently it has become now only a union territory. In a piece on Banni, a region in Gujarat, the scholar Rita Patari talks of how for the nomadic tribes of Gujarat, the narrative of displacement during partition, which has been the dominant narrative for so long, all of us have said it is the greatest displacement in history, etc., was not the narrative. The trauma for them was that they had to live settled lives because their lives were nomadic. They were free to cross, chasing crops, chasing their animals to where food could be found, and suddenly they had to be settled. So there's another different aspect. And a third example comes from a paper I once read on the Khasi tribals in the hills near Shillong, whose lives were deeply impacted in terms of livelihoods because the giving away of Sylhet to East Pakistan meant that the goods that they used to buy from Sylhet to sell in their markets in the Khasi Hills were now no longer available, and these tribals in the Khasi Hills had no idea of what had happened to turn their lives upside down.
and yet it was the impact of partition in a region quite remote from the epicenter, which was Punjab. Another question that scholars and writers are asking is, how do people traverse the vast spaces, and what can we learn from their journeys? What can we learn, for example, from the trains that people took, the miles they measured, the ships on which they sailed, the seas they crossed? I don't know if you are aware that the Punjabi Hindi writer Amrita Pritam wrote a rather wonderful poem called Main Aankhain Varis Thanu, Tu Kabran Vichon Bol. And it's a really iconic poem she wrote after partition, and she wrote it on the train when she was riding on a train. So, these are also dimensions that we need to think about. A subject that I found fascinating is how space transformed for women. And mostly confined to the domestic sphere, women now had access to the public for months on end when they were crossing and walking in the jathas and in the kafilas that came across. And suddenly the public sphere, the road, became their domestic space. What did this do to women? It's something to think about. So this historical event in our history gives us so much to explore, which is just coming out. The new research has also drawn our attention to the intergenerational nature of trauma and the ways in which memories are passed down. Ever since the turning of the tables on existing historical methodologies with the entry of oral history, the testimony, the interview, and indeed with those, the bringing in of the small stories of ordinary people, there's been an explosion of such initiatives. Even though the most direct survivors have gone, as I said, their stories remain. And the new generations are locating newer and more exciting sources for these. Some of this work is cross-border. So there is a book that I read some years ago, which is called This Side, That Side. It's a book of graphic stories written and illustrated by artists across the region from India, Pakistan, Bangladesh. And this collaboration across the region, across those borders, has been enabled by something that has also enriched the history of partition, that is the development of the internet. Also, as we go deeper into people's lives, the focus of what was originally only on the suffering of partition has also shifted. So slowly stories of lives made, of opportunities taken, of women feeling that they were able to spread their wings, these stories are emerging, and it is interesting to see that loss, grief, and suffering were there, but also there are other kinds of stories emerging. So, one of the things that I remember from my youth is, and I studied at Miranda House in Delhi University, was the presence of a lot of single women in clerical jobs in the university. And at a later stage, when I became interested in partition, I realized and I learned that these were women who were all displaced, who missed out getting married because of the displacement of partition, but whose lives changed because of the jobs in which they were located by the government. So here's another way of studying partition. Okay, I will take another 4 or 5 minutes, is that okay? An aspect that has not seen enough attention but is gradually opening up is the experience of caste. So years ago, when I was doing my work, I actually had no idea, or I hadn't even thought that you could look at partition in terms of caste. And it was an interview with a sweeper called Maya Rani in a college in a place near Batala that actually alerted me to this experience, because when Maya Rani was telling me about her village, what she said was that their village was located on the border and it wasn't clear whether it would go to Pakistan or whether it would go to India. And when a rumor flew that it would go to Pakistan, all the Hindus would pack up and run away, and vice versa. And then she and her friends, all of whom were 16 years old, would just wait for these rumors, and they would wait for people to go, and they would jump into their houses, and they would take stuff away and, take it home and use it, atta, dal, rice, gold, etc. And when I asked her, why were you not targeted? She said, we are not Hindus or Muslims, we are Dalits. And that's what led me to the experience of looking at Dalits
in the Punjab, and I realized that there was a strong presence of Dalits in the Punjab, and just as the Hindus and Muslims had demanded a homeland of their own, Dalits in Punjab too had demanded a homeland of their own and given it a geography. And so looking at Ambedkar's work on caste, this whole aspect is becoming very important and starting to open up. So modes of talking about partition have changed. Not only is it only the preserve of scholars and academics, but the explorations that are taking place now are inside families. They're emerging through art, they're emerging through graphic stories, stories for children, through film and installations, and they're no longer limited to our 2 or 3 countries. So recently I watched something on the net, which is a new initiative taken by a group called VVT in Bangalore, which is also looking at partition. But what this is it's an immersive experience which recreates a partition situation for you, and you enter it by clicking on a link as a participant, and you make the decisions that people were forced to make at that time. And in doing so, you learn what goes into making a difficult, life-changing decision in which you don't have a lot of choice. I will send the link, because it's a very interesting thing for students to get involved in, and it's actually quite exciting because you start learning. There are little factoids along with it, and one choice you make takes you in one direction, the other choice you make takes you in the other direction. So again, there is all sorts of ways of starting to look at it. By a young man from Jamia, whose family was divided at partition because the entire extended family chose to go to Pakistan, but his father insisted on staying back, and they stayed. And after his father died, he lost contact with the family, and now, because he's in Jamia, because he's Muslim, because he has family in Pakistan, his desire to deeply reconnect with the family cannot be fulfilled, because the political conditions are such that if he is to do that, he will immediately come under the scanner. So in a sense, new political developments are also dictating or pushing us into new ways of looking at partition. We have been lucky to discover this rich resource. I only pointed to a few things of it on partition, because of course our 2 governments are still unwilling to open up partition files to us. As you know, as scholars, that in most countries there is a 30-year limit after an event or after a moment of history when files about that moment are opened up to scholars. But neither in India nor in Pakistan have those files been opened up, even though it is 75 years now, because I think our governments think that we are not mature enough as citizens to be able to deal with the traumatic materials that will be in those files. And yet, look at the rich ways in which so many people have explored partition. So I am very glad to say to you that our government's designs to keep us protected from this deeply traumatic and terrible history have been defeated by our citizens, both scholars and other people who are exploring this history in myriad ways. Now, I want to just close by telling you a little story very quickly. There are so many stories that one can go on endlessly, and this is the story of a legal case that was fought in 1954 post-partition. It is the story of an abducted woman who was called Sardaran or Mukhtiar Kaur, and who was found in the house of a man called Ajay Singh in Faridpur district. At the time, there was a law in place, and I'm not going into the entire history of abducted women. There was a law in place that said that if a woman was found in a house where she had not been there before, and if anybody suspected that she might have been an abducted woman, they could report her, and the police would come in and take her away and put her in a camp. So somebody reported that in the house of Ajay Singh, they had seen 3 young women. And when the police came to search, they found only one woman who was he called her Mukhtiar Kaur. She was 12 or 13 years old, but people suspected that she might have been an abducted woman, and she was taken away. And the proceedings began where the magistrate started to look into what was the truth of this story. And as they looked into the truth of this story, and I use the word truth in quotes, they came up against issues which nobody had thought to look at before. One of them was that when you found a woman in a house who was assumed to have been abducted, and when you went to take her out of that house,
into the transit camp while her case was decided, under what law would you take her out? How can you take an adult woman or even a minor woman away without having legal backing for that? And therefore, the Indian government, and I can speak only about the Indian government, used the IPC, the Indian Penal Code, to arrest the woman. So that was the only law under which you could take her. But if you arrest somebody, you're required by law within 24 hours to inform them why they have been arrested. And then they can go before the magistrate to seek bail, but they could not let these women go, because if they let them go, where would they let them go to? Back to their abductors, or what? What would they do? So similar issues came up. Was it legal? Was it a violation of her rights? Was this law that was made for abducted women in violation of the Indian Constitution? And the whole case went up to the Supreme Court, where a bench of 5 judges sat to rule on whether this law was against the Constitution or not. And listening to their deliberations, which are fascinating, is an object lesson in how patriarchal our laws are today, but how also the state's attempts to deal with women were both benevolent and misogynistic and patriarchal, and it's something that we need to really look at. And they looked at women as if women had no intelligence of their own, no agency of their own, no way to make up their minds, which you see in so many court judgments also today. Now for this, I will probably be thrown in jail, but I am talking about partition, so maybe it won't happen. But all I'm trying to say to you is that revisiting partition for me 30 years after I did my work means really looking at the huge amount of rich research that is happening, the huge amount of really interesting work that is happening, the different media in which partition is being explored. And the most interesting thing of all is the personal exploration that young people are doing. So if any of you are from partition families, and I suspect many of you are, you may be the 3rd or 4th generation, I would urge you to talk to your parents, talk to your grandparents, learn as much about them, because this is your history, our history, and it's our job to know as much about it as possible. Thank you so much for listening. Thank you so much, ma'am. That was truly a wondrous and lucid description, as was expected. And I think I would urge the students to go a step further. Document what your grandparents and others have to say, because very soon that will also be lost. That generation will be lost to us. Thank you so much, ma'am. And with that, I now invite our principal, Professor Harpreet Kaur, to formally thank our illustrious speakers. Professor Harpreet Kaur is the principal of Mata Sundari College. She's an erudite scholar and a wondrous leader herself of an institution that has just been credited with a grade A by the NAC under her leadership. So a big hand for NAC. My job is just to pose a vote of thanks. I know you're here for since 2 days, previous 2 days, and the 3rd day together, you have heard quite a lot about partition. And revisiting partition is important, as has been emphasized, because this is a history, oral history which will be lost. So you must understand and you must feel the trauma, because the process of nationalism is such that, you know, we feel that nationalism by our heart, by our sentiments. There have been Jews who are living all over, yet they were unified with this kind of nationalism. So that is, and Indian diaspora today is so important that outside we have so many people. So that very spirit is very important. So we have to talk about partition, rethink about partition, so that our bond for nationalism becomes stronger. One more thing about this particular partition, which really haunts me, is that of course we saw a lot of communal frenzy and a lot of so many things there.
And we have been discussing with the oral stories like Professor Urvashi Butalia has elucidated in various dimensions. It is not only the personal life story she explained, but also the economic impact and also the impact on law. So various dimensions we can see, but you must think about it, you must read about it, and you must record it. So recording is more important. And in this whole way, that is why we have thought of this conference of partition. I personally don't have much of personal experiences, but I will just very briefly illustrate two episodes from my life, which actually has some kind of things of partition there. Because first thing is, I think Dr. Harmanspa Sakwi is here. We went to Pakistan in 2018. And on the day while we were traveling back, we saw old parents with grandchildren and children, and they were crying so bitterly that it was making us uncomfortable. Still, we realized the reason, because he said that we were lost with this partition, and my sons were here, and the grandparents were separated, and now he has got the visa after so many years, and this is the first time he is seeing the grandchildren. And probably he will not see later on because he might not get visa. So this is the legacy we are continuing. And so this legacy should not be continued. That proximity should be there because after all we were just one subcontinent. And even when the Turks came here, they made India as a part of their life, and those traditions traveled here, and we also mixed the traditions, and a personal and private space which was very conducive, which was very intermingling, existed, and that existence is there, seen in the language of Urdu, which is there, and the Sufi tradition, which we just hailed as so important. So all these things are just the mixture of all the traditions. So why and what happened on that particular day that we became sheer enemies of each other? This is what we have to introspect. Our humanist streak, which should have been there in the transfer of population, what happened that we became enemies of each other? So, but these similar flares up, which are coming even now, whether it is 84 or later on, these flare-ups are maybe revisions of partition which we are seeing and which should not be there. So this legacy of partition should stop, and we should live in a harmonious society together. That is what we should aspire for. And the second story about partition, which I heard from my family very close, that a mother who is leaving behind a 1-year-old child, rather throwing that child into the river because she could not because she knew, the mother knew that it was very difficult for her to survive. And but some relatives happen to pick the child up, and the child is still alive. So that kind of story, that the mother is just forced to leave behind a young child because the future is so bleak. So so those you see how inhuman it is, and but you have to take such decisions because of the trauma there. So these things, of course, will continue, but these things, especially for the young people, for the young students, because I know you have heard most of the things for your first time, but it should be there. Even this trauma should be there, or you should read about it so that we don't repeat the mistakes. Our inhuman streak never comes out, even in those dire circumstances. This is a lesson, I think, which we can learn from partition. And another thing, my job is just to propose a vote of thanks. I know it has been heavy, and we have a Kavi Darbar also, which is going to be very interesting. So first of all, I thank Ishtiaq Ahmadji. He's joined us online, and he was very keen to speak, and we were very keen to hear him. But those sharing of thoughts was really invaluable. And Dr. Urvashi Butalia, of course, the leader in her own capacity, who led this oral tradition, which we are seeing so many things online also, and a lot of corrections are there now. But she was the one who actually started this kind of thing, that this oral tradition will actually define partition, not only the political approach which is there, political approach which was blaming each other and blaming each other that this is why partition happened, but that thing is not going to solve the problem, because the problem was with us, all of us, whether this side or that side.
both the sides had the brain to follow. And of course, and all those guests who are here present, Dr. Sadhu is here, Dr. Mohanjeet is here, Dr. Vinita, and so many all others who are here. And of course, I will be failing in my duty if I don't thank Ambassador Ravdeep Suriji, because with his own starting, I think we got the whole picture of the trauma and whole picture of partition in his very brief words and brief delivery. So I thank him, although he's not here, but yes, I owe my thanks to him, and I owe my thanks to all the people who are here, especially my faculty members and non-teaching who have made this program a success. Dr. Lokesh and Dr. Harvinder have outprint C for many months, and they have, and this is the product of it. And of course, ICCR also, and also Dr. Venupa Singh, who has been so courteous and so benevolent that they, a lot of, even when I asked that we have done really a good lot of expenditure into it, she extended whatever aid has been given for the conference. And of course, the students who are here, because I know many of you are first year students, it's just kind formal orientation we have not had, and so this academic orientation, I'm sure you are going to remember this lifelong. This will always be there in your hearts and mind, and you are going to remember that how in college we attended a conference, and this is precisely our aim. So with a lot of applause to the young students and all who are part of this conference and who made this conference a success. Thank you all. And let me take this opportunity to thank you, ma'am, for your leadership and steering the institution with academic activities that enrich the lives of one and all. May we continue to go ahead with these activities under your stewardship. Thank you so much, ma'am. I now hand over the mic to Dr. Lokesh Kumar Gupta to conduct the rest of the proceedings. Thank you so much. Thank you, ma'am. पिछले 3 दिनों के एकेडमिक सेशन में मुझे लग रहा है कि कुछ थक गए होंगे, उस थकान को दूर करने के लिए हमने और आपको रिफ्रेश करने के लिए एक कवि दरबार का आयोजन किया है। अभी तक हम लगभग दिमाग से बात कर रहे थे, कुछ दिल से भी बात कर रहे थे, लेकिन हम प्योर दिल से ही बात करेंगे। मैं मैडम सज्जू को इन्वाइट करता हूँ कि आप आए और इसका आयोजन की सदारत करें। मैडम सज्जू, डॉक्टर अटल सर, और मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर विनीता से कि डॉक्टर विनीता मंच पर आ जाए। डॉक्टर सदाचरण सिंह जी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी मंच पर आ जाए। हमारे बीच डॉक्टर रिफत जरी, हमारी महाविद्यालय की वरिष्ठ अध्यापिका है, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि दिल्ली से है, मंच पर आ जाए। अंतरराष्ट्रीय छात्रा पहला हमारे बीच में है, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। हमारे वसीम राशिद, डॉक्टर वसीम राशिद, उपस्थित है। हम गुजारिश करेंगे कि आप ये मंच पर आ जाए। एक शब्द कई दिनों के बाद समझ में आया, स्वागत और अभिनंदन में फर्क होता है। मैं डॉक्टर जीवन कुमारी जी से भी रिक्वेस्ट करूँ कि आप मंच पर आ जाए। आप वरिष्ठ कवि हैं, वरिष्ठ आलोचक हैं, आप आ जाए और निवासी का एक बहुत बड़ा नाम है, तो भी सुनाते हैं। आ जाइए, एक शेर हो गए।
हीरा पुरस्कार से अवार्ड। स्वागत हम पहले कर रहे थे, अभी अभिनंदन कर रहे हैं। और एक अभिनंदन, ऐसा अभिनंदन जो लोग स्वप्न देखने वाले, स्वप्नों को रचने वाले। हमारे बीच डॉक्टर मोहन जी, एक बहुत बड़ा नाम, साहित्य अकादमी अवार्डी से पुरस्कृत कवि, लेखक, अध्यापक, अनुवादक। कोई भी व्यक्ति अपने पीछे बहुत बड़ी विरासत लेकर चलता है। कवि, लेखक, अध्यापक की विरासत, सबसे बड़ी विरासत उसकी किताबें होती है। बड़ा लगाव होता है किताबों के साथ। हम सबको अपनी किताबों से बहुत लगाव है। पेज पर कुछ लिखा होता है, उनसे भी बड़ा लगाव है। डॉक्टर मोहन जी ने अपनी किताबें हमें अपना वारिस मान लिया, हमारे कॉलेज को अपना वारिस, अपनी उस पूरी विरासत को, लगभग 3000 किताबों की विरासत को एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे महाविद्यालय छात्रों को पढ़ने के लिए। और मैं ये चाहूंगा कि इनकी विरासत के वारिस आप हैं और उस विरासत को आपको संभाल कर रखना है, उसको वारिस आपको बनना है। उन्होंने रचा, उन्होंने पढ़ा, पढ़ाया, जो उन्होंने अनुवाद किया, दूसरी भाषाओं से अनुवाद किया, पंजाबी में किया, हिंदी में किया, लिखा, उन सबको आपके सामने आपकी लाइब्रेरी में भेजा है आपको वारिस बनाने के लिए। आप उनको पढ़ें, उन पर लिखें, उनसे कुछ सीखें, सपने देखें और जिंदगी को आगे बढ़ाएं। मैं मैडम उर्वशी बुटालिया जी से, पद्मश्री उर्वशी बुटालिया जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे महाविद्यालय की ओर से, हमारे महाविद्यालय के अध्यापकों की ओर से हिंदुस्तान का भविष्य बैठा है आपके सामने, उसकी ओर से ये लोग अभी सपने देखते हैं, सपने बुनते भी हैं और सपने रचते भी हैं, इनकी ओर से अनाजी आप ही आएंगे। अच्छा इनिशिएटिव है कि हम लीजेंड्स को बुलाकर उनका सम्मान, अभिनंदन करने की शुरुआत कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा बाकी आप आ जाए, 2 फोटो हमारे आमंत्रित अतिथियों का स्वागत करें। वॉलंटियर्स मैडम सबू का प्लान देकर स्वागत किया जाए। मैडम
डॉक्टर वनीता कन्या पंजाबी एडवाइजरी बोर्ड Mr. Sahil Anwar. कविता और मेलोडी कुछ वाणी प्रस्तुत करें। मैं सबके लिए सेंटेंस पढ़ रहा हूँ कि गुलों में रंग भरे बातें जो बाहर चले। बैठ जाइए आप सबके लिए भी है और मुशायरे की आगाज के लिए कि गुलों में रंग भरे बातें जो बाहर चले चले भी आओ गुलशन का कारोबार चले। डॉक्टर वनीता सर, मैं कुछ और पॉइंट बोलने जा रही थी, लेकिन आपने मेहंदी हसन की गजल शुरू की, तो मैं मेहंदी हसन को याद करते हुए कविता साझी करती हूँ। कल मेहंदी हसन ऑडियो कैसेट से गा रहा थी, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। याद आया मेहंदी हसन, याद आया वो शायर भी जिस रचे सन इसके बोल। कल अनुराधा पौडवाल टीवी ते गा रही सी, उससे भी तो जिस विच गाया सी मेहंदी हसन ने, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। अनुराधा दाढ़ी सिर पे, मैंने किस्मत की लकीरों से छुड़ाया है तुझे, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगी। चाहूंगा चाहूंगी शायर के बोल, गायक की आवाज, गायिका की आवाज, श्रोतियां दर्शकों का भाव, चाहूंगा चाहूंगी। ये शब्द तुरंत लगे कन्ना तो मेरे मस्तक वाल, लगे करन सफर ते रुक रुक जान, खड़ोन ते सोचन कि वफा लई एक बार गवाना पैंदा। मन सोचे कि वफा लई एक बार गवाना पैंदा, कि प्यार नूं अपनियां कस्मां लिख के गा के कह के गा के गा करके सुनानियां पैंदियां, जमा करवानियां पैंदियां। मन प्यार बारे क्यों सोचन लगा, प्यार बारे, प्यार की निजता बारे, प्यार के निग बारे, निजता की भावुकता बारे, जो कसमां खा के एक बार तो आंदा है, तब मन सोची जावे कि यही प्यार है, कि यही प्यार है। शुक्रिया। मैं सरदार गुरचरण सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए। मैं अपने आपको बिल्कुल बीच में नहीं लेकर आऊंगा, क्योंकि बिल्कुल नहीं लेकर आऊंगा अपने आपको बीच में। सरदार गुरु
ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 39ਵੀਂ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 39ਵੀਂ ਵੰਡ ਨੇ ਬੜਾ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਅਧੂਰੀ ਫੁਲਕਾਰੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਰੰਗਲੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਜਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਜਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਭਰੀ ਥੋੜੀ ਸਖਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਅਧੂਰਾ ਬਾਰਡਰ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਾ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਭਰੀ ਥੋੜੀ ਸਖਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਅਧੂਰਾ ਬਾਰਡਰ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਸ਼ਕਿਆ ਬੋਲੀ ਪੁੱਤ ਫਾਤਮਾ ਪੱਕੀ ਸਹੇਲੀ ਪੁੱਤ ਫਾਤਮਾ ਪੱਕੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਵੀ ਭੈਣੀ ਸਾਂ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਪਨੇ ਬੁਣੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਅੰਬਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਚੁੰਨੀ ਚੜੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੋਪਾ ਤੋਪਾ ਰੱਖਾ। ਪੁੱਤ ਫਾਤਮਾ ਪੱਕੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਵੀ ਭੈਣੀ ਸਾਂ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਪਨੇ ਬੁਣੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਅੰਬਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਚੜੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੋਪਾ ਤੋਪਾ ਰੰਗ ਪਏ। ਇਹ ਚੰਦਰਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਤਪ ਗਈ ਲਹੂ ਦੀ ਨਦੀ। ਕਿਹਾ ਚੰਦਰਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਤੋੜ ਗਈ ਤਪ ਗਈ ਲਹੂ ਦੀ ਨਦੀ। ਮੁੜ ਨਾ ਆਈ ਖੇਤ ਨਾਲ ਵੇਖ ਮਿਲਾਓ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਫੁਲਕਾਰੀ ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਪਾਉਣੇ। ਕਿਹਾ ਚੰਦਰਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਤੋੜ ਗਈ ਤਪ ਗਈ ਲਹੂ ਦੀ ਨਦੀ। ਮੁੜ ਨਾ ਆਈ ਖੇਤ ਨਾਲ ਵੇਖ ਮਿਲਾਉਣ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਫੁਲਕਾਰੀ ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਨ। ਤੇ ਕਹੀ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੰਗ ਉਡਾ ਕੇ ਰਹੇ ਕਰ ਗਈ ਵੇਲੇ ਸਖਣੇ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉੱਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਕੇ ਵੀ ਨਾ ਗਈ ਚੰਦਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਕੇ ਵੀ ਨਾ ਗਈ ਚੰਦਰੀ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਲੀਰ ਨਾ ਉਸ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਰੰਗ ਮੁੜ ਉਠਾਏ ਹੀ ਨਾ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਸਖਣੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜੀਵਦਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਗਵੀਂ ਦੀ ਸਗਵੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸਗਵੀਂ ਦੀ ਸਗਵੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਜਿਹੀ ਚਿੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦਾ ਖੜਾਉਂਦੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਦੇ ਵੇਖੀਏ ਖਾਲੀ। ਜਾਪਦਾ ਖਿੜਖੜਾਉਂਦੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਰੰਗਲੇ ਥਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਦੇ ਵੇਖੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਬੜੀ ਮੋਹ ਖੋਰੀ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਝੋਲੀ ਪੈ ਲੰਬਾ ਹੌਕਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੋਲੀ ਪੁੱਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵਿਹੜਾ ਆਂਗਨ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਵਿਹੜਾ ਵਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧੁੱਪਾਂ ਛਾਵਾਂ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਖੈਸਰਦੇ ਹਾਸੇ ਰੋਸੇ ਛੜਕਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਚਹਿਕਦਾ ਜਾਪਦਾ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ
ਧੁੱਪਾਂ ਛਾਵਾਂ ਲੋਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਖੈਸਰ ਦੇ ਹਾਸੇ ਰੋਸੇ ਛਣਕਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਚਹਿਕਦਾ ਜਾਪਦਾ ਰਾਤੇ ਕੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਵੇੜੇ ਚੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਧੂਏ ਦੀ ਕੁੜਤਣ ਵੇੜੇ ਚੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਧੂਏ ਦੀ ਕੁੜਤਣਗੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿੱਘ ਵਿੱਚ ਸੌਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕੁੜਤਣਗੀ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿੱਘ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕੁੜਤਣ ਕੀ ਰਹਿ ਵਿਹੜਾ ਖਿੜਦਾ ਮਹਿਕਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਘਰ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਵਿਹੜਾ ਗਲੀ ਦੀ ਬਿੜਕ ਰੱਖਦਾ ਵਿਹੜਾ ਗਲੀ ਦੀ ਬਿੜਕ ਰੱਖਦਾ ਪੈਰ ਚਾਲ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਗਏ ਵੇੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਸਤਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ ਤਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਬਚੀ ਹੈ दूरदर्शन की खिड़की बची है एक जल्दी खोलता शोर ही सुनाई देता है बहुत धन्यवाद सर। कुछ दार्शनिक बातें इस कविता के अंदर थी। कविताएं सिर्फ आनंद के लिए नहीं होती, कविताएं गहरी सोच से लिखी जाती है, उसमें कुछ गहरे प्रश्न होते हैं, उनको पकड़ना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आवाज देता हूँ मोहम्मद अनस फैजी साहब को। आप दूरदर्शन उर्दू के लिए कई प्रोग्राम एंकर और वॉइस ओवर कर चुके हैं। नए साल के स्पेशल प्रोग्राम के अलावा इन्होंने दूरदर्शन के बेटबाजी समझते होंगे आप सब, और मंजर प्रोग्राम के लिए भी एंकरिंग की है। मोहम्मद अनस फैजी ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस पर 10 साल हो सकती रहे हैं। एक खास सीजन के शायर हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से उर्दू भाषा में BA और MA की डिग्री प्राप्त की है। इन्हीं के कुछ अशार हैं, मैं पढ़कर आप लोगों को सुनाता हूँ और आवाज भी उन्हीं से देता हूँ कि उदास है जो हसीन चेहरे में, उदास है जो हसीन चेहरे में, उनको हंसना सिखा रहा हूँ। उदास है जो हसीन चेहरे में, उनको हंसना सिखा रहा हूँ। मैं जब मरूंगा मेरे कफन से भी फूल निकलेंगे, देख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और हमारी डाइट पर सभी बड़े मोतबर बड़े मोहतरम नाम मौजूद हैं। ये मैं बड़ा सौभाग्य समझता हूँ इस कॉलेज में आया और आप सबके सामने अपनी कविताएं अपनी शायरी पेश करने का मौका मिलेगा। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि लोग हंसे। पिछले 15-20 सालों में उर्दू और हिंदी कविता के ताल्लुक से इतनी सारी बातें हो गई। शायरी सोचने का काम करती है, शायरी आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है, शायरी जो है वो एक नया इंसान बनाती है, नया भारत बनाती है। इतनी बातें हो गई कि इस चक्कर में जो शायरी का लुत्फ था, जो मजा था, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला गया। तो मैं बहुत आध्यात्मिक बातें नहीं करूंगा आपसे, आपके मतलब की कुछ अपने मतलब की बातें करूंगा। कुछ शायरी ऐसी भी है जो मुझसे जबरदस्ती कहलवाई गई, तो कहीं भी आपको ये लगे कि वो आपके फेवर की शायरी नहीं है तो आप ये अंदाजा लगा लीजिएगा। वो रास्ते में कुछ लोग पकड़ लेते हैं रोज मुझे और घेर घार के मुझसे कहते हैं इस तरह की शायरी करो, इस तरह की कविताएं करो। तकरीबन 4 साल इस कॉलेज से गेट पे पढ़ा रहा, आज अंदर आने का मौका मिला है।
और दुनिया का कोई मर्द ऐसा नहीं है वो स्टैंड अप कैंडिडेट खड़ा ना कि अगर उसके लव लेटर्स नहीं मिलते तो ये हमें अंदाजा ही नहीं होता कि वो कितना एक जालिम बादशाह के दिल में भी किसी के लिए दिल धड़क सकता है। तो मुशायरे में अनस रात गर्ल्स कॉलेज के मेरे पहुंचते ही हर ओर मच गई हलचल। मुशायरे में अनस रात गर्ल्स कॉलेज के मेरे पहुंचते ही हर ओर मच गई हलचल। उचक उचक के मुझे देखती थी हर लड़की, हर एक तरफ से सदा आ रही थी विंड डीजल। सामने वाले की तारीफ भी अब लेना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हम उसकी तारीफ करें। मुशायरे में अनस रात गर्ल्स कॉलेज के मेरे पहुंचते ही हर ओर मच गई हलचल। उचक उचक की मुझे देखती थी हर लड़की, हर एक तरफ से सदा आ रही थी विंड डीजल। ये जो मोहतरमा हमारे घर पहुंच गई है ना, ये एकदम आसानी से मैसर नहीं आई। और मुझ जैसे इंसान को भी कई बार उनके दरवाजे में जाके नाक रगड़ी, सर फोड़ा, दीवारें तोड़ी। उससे पहले कॉलेज की दीवार नहीं टूटी, शरीर टूटे वहां तो हमेशा। इसमें खतरनाक गार्ड बिठा रखे हैं आपने, वो देखते ही फूलने लगते हैं। किसी मर्द को देखते हैं, लड़के को देखते हैं, सबसे पहले फूलते हैं वो। आदमी की आधी मोहब्बत नहीं समझ जाती है। गार्ड से मोहब्बत होने लगी, मोहब्बत भी चलती है ना, वो ब्रांड आएगी। आराम से घेरे में हाथ डाल के जाती है, अभी आ सकते उनकी लड़की बूटी चली जाती है। तो हुआ ये कि हमने बहुत लगातार प्रपोज किया और लगातार रिजेक्ट हुए, लेकिन ये हमारा हिम्मत थी, हौसला था कि कभी हार नहीं मानी हमने। हम भी 10 बार रिजेक्ट हुए तो हमने 30 बार फिर प्रपोज किया। लेकिन 4 महीने देखने बड़े काम के हैं। जो लड़कियां मना करती थी लगातार, कहती थी कम वक्त बेड़ा गर्म हो तेरा चला जाए मार्के टूटे, तो अब उनको देखते तो बड़ी खुशी होती है। खुशी क्यों होती है कि पेट निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा। पेट निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा। पान की पीक भी दांतों पे जली होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, शौहर को जो देखो तो खुशी होती है। मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखो तो खुशी होती है। गरीब से शौहर के साथ चली होती है, डायमेंशन बिगड़ा हुआ अपने बेचारों को बड़े प्राउड से ले रही थी। बड़े शाहरुख खान, ऋतिक रोशन को रिजेक्ट करती थी। तो अच्छा हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ कजन रिलेशनशिप में शादी हो जाती है, आप सब लोग जानते हैं, बड़ी आसानी है उसकी। आप ऐसे पूछिएगा, हमारे स्कूल में टीचर थी मैम, वो बार बार मुझसे पूछती थी। उस जमाने में जिंदगी चैनल आता था, जो पाकिस्तानी सीरियल्स आते थे ना, तो बार बार आगे पूछती थी आपके यहाँ कजन में हो जाती है? मैंने कहा हाँ हो जाती है। फिर अगले दिन आई मेरे पास, आपके यहाँ हो जाती है? मैंने कहा हो जाती है। फिर तीसरे दिन लगातार 7-8 दिन तक रुक कर ये सवाल किया उन्होंने कि आपके हो जाती है। तो मैंने कहा मैम इतनी बार क्यों पूछ रही है, कजन का नाम बता दीजिए ना। कुछ दीजिए मैं कर दूंगा। तो क्यों करती फिर रही को मुझको ठोकर मारकर, एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। देख लो जो देखती हो ख्वाब तुम सलमान के, बाद में खाजा के लड़के से लगन होना ही।
मेरे साथ तो बालों का मसला नहीं है, लेकिन कुछ साथी आगे पूछते हैं यार बाल सफेद हो गए, क्या करूं कैसे करूं, उनको एक मशवरा है मेरी तरफ। जब से सफेद उनके होने लगे हैं केसू, लेने लगे हैं उनको सब देख कर जमाई। आजकल तो यार ब्यूटी की अलामत भी है सफेद बाल। कुछ लड़के तो बकायदा अपने सारे बाल सफेद करा रहे होते हैं और काला करा रहे होते हैं। जब से सफेद उनके होने लगे हैं केसू, लेने लगे हैं उनको सब देख कर जमाई। कल मुझसे कह रही थी हल कोई तुम बताओ, मैंने कहा कि जानम यू नाउ मस्ट डाई। यू नाउ मस्ट डाई, मैंने कहा कि जानम यू नाउ मस्ट डाई। हाँ जाहिर है कि लेकिन होता कुछ नहीं है। देखिए मैं और छोटा कर देता हूँ। कैलकुलेटर, कैमरा, घड़ियां, कलम और नोटबुक, हर तरह का ऑफलाइन अब सभी धंधा फिनिश। कैलकुलेटर, कैमरा, घड़ियां, कलम और नोटबुक, हर तरह का ऑफलाइन अब सभी धंधा फिनिश। कर दिया है इस मोबाइल ने फिनिश, सब कुछ अनस। पासवर्ड बीवी को मिल जाए तो फिर बंदा फिनिश। बंदा फिनिश। एक बहुत जल्दी से तेजी के साथ एक नज्म सुनाकर मैं इजाजत चाहूंगा। नज्म का नाम है एक्सपेरिमेंट, बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट। एक लतीफा है उसमें मैंने नज्म किया है। बायोलॉजी के गुरुजी ने किया एक्सपेरिमेंट, मुतमईन एक्सपेरिमेंट से हो गया हर स्टूडेंट। सामने चूहे के चुईया को उन्होंने रख दिया, दूसरी जानिब उन्होंने रख दिया एक मुरमुरा। पेट के आगे सुना तब चूहे ने दिल का कहा, दौड़कर फौरन कतरने लग गया वो मुरमुरा। साथ में चुईया ने अपने एक बिस्किट को रखा, चूहे ने इस मर्तबा भी जाके बिस्किट को चखा। चूहे की इन हरकतों पर हर कोई हैरान था, इस नतीजे का भला किसको यहाँ इम्कान था। फिर गुरुजी ने सभी बच्चों को एक लेक्चर दिया, पेट भूख के आगे जला है कब मोहब्बत का दिया। सर्च करके देख लीजिए आप इंटरनेट पर, फलसफे आकर रुके हैं सब के सब इस पेट पर। आप भी इस तजुर्बे से कुछ सबक ले लीजिए, छोड़कर रोमांस को बस पेट पूजा कीजिए। सर की बातें सुन के सब पर खामोशी तारी हुई, एक सदाए आह सबके दिल से भी जारी हुई। हर कोई ये मान बैठा था मोहब्बत कुछ नहीं, पेट है सब कुछ यहाँ पर, दिल की हसरत कुछ नहीं। डेस्क पर पीछे की जानिब मैं भी बैठा था वहां, डेस्क पर पीछे की जानिब मैं भी बैठा था वहां। मेरे भी दिल से मुसलसल उठ रहा था अब धुआं। खामोशी को तोड़कर मैंने कहा, एक्सक्यूज मी, आपके एक्सपेरिमेंट में मुझको दिखती है कमी। अब जरा मेरे कहे पर आप चलकर देख लें, हो सके तो एक दफा चुईया बदल कर देख लें। कुछ अंदर की चोट होती जो नहीं बता रहा है। जब करेला नींद पर पहुंचा तो मीठा हो गया, जब करेला नींद पर पहुंचा तो मीठा हो गया। झूठ उसने किस कदर बोला तो सच्चा हो। मैं आवाज देता हूँ डॉक्टर मिसेज वसीम राशिद जी को। डॉक्टर मिसेज वसीम राशिद जी, MA, BEd, PhD, मास कम्युनिकेशन।
20 वर्ष अनुभव पढ़ाने का। इसके अलावा जर्नलिंग लगभग 10 वर्ष से कर रही हूँ। टीवी की चकाचौंध में है, कई चैनल्स पे काम करती हैं, अपने चैनल चलाती हैं, बहुत काम करती हैं। और अभी आप देख रहे हो, मैं एक शेर पढ़ दूँ इनको देखकर। रहती है रुखसारों को, रुखसारों को मारी। रहती है रुखसारों को, तूने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। ना तो दौलत है ना दीनारों दिरहम रखते हैं, ना तो दौलत है ना दीनारों दिरहम रखते हैं, हम तो इतने ही में खुश हैं कि कलम रखते हैं। आज एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर मैं ये सेमिनार देख रही हूँ जिस पर आमतौर पर बात करते हुए लोग घबराते हैं। पार्टीशन एक ऐसा मौजूद है, क्योंकि हिजरत का दर्द, हिजरत जानते हैं ना, हिजरत करना, यहाँ से वहां जाना, वो दर्द हम लोगों ने बहुत सहा है। और मेरी माँ के 8 माशाल्लाह बच्चे थे, मैं बहुत छोटी थी, जिसमें से 4 पार्टीशन में पाकिस्तान में रह गए। तो मेरी वालिदा अक्सर ये बात कहती थी कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तो ये दर्द वो है जो हमने सबने सहा है। मैं इससे पहले कि इफ़त ज़रीन बाजी का हुक्म था कि मैं पार्टीशन के ताल्लुक से कुछ सुनाऊं, लेकिन उससे पहले चूंकि मैं खुद एक अदना सी उस्ताद रही हूँ, 20 साल पढ़ाती रही हूँ, उससे पहले मैं अपने तमाम उस्ताद यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी नज़्म 4 मिसरे कर रही हूँ। बच्चों आप देखिएगा, आप भी अपने उस्ताद के लिए ये 4 मिसरे नज़्म कर सकते हैं। जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। और इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती, वो इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती, वो जिंदा रहते हैं किताबों के हवालों की तरह, जिंदा रहते हैं किताबों के हवालों की तरह। अनस ने इतना खुशगवार माहौल बना दिया, तो मैं नहीं चाहती थी कि आप जरा से भी रंजीदा या अफसरदा हो। मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं आपको भी खुश करके जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं वो तमाम शेर जरूर पढ़ूंगी जो हिजरत के ताल्लुक से मैंने कहे हैं। वो घर जहां पर अब कोई नहीं रहता, जहां से सब लोग हिजरत कर चुके हैं, पार्टीशन में वो घर सुनसान पड़ा है। पार्टीशन के बाद से मतलब समाप्त कीजिएगा बाजी, इफ़त बाजी देखिएगा। न वो कहानी न दास्तान बाकी है, न वो कहानी न दास्तान बाकी है, बस एक जख्म का दिल पर निशान बाकी है। न वो कहानी न दास्तान बाकी है, बस एक जख्म का दिल पर निशान बाकी है। तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, शेर समाप्त कीजिए। तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, हमें भी लगता रहा आसमान बाकी है। तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, हमें भी लगता रहा आसमान बाकी है। न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की, न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की, ना जाने किस लिए आंखों में जान बाकी है। न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की, ना जाने किस लिए आंखों में जान
बाजी आपकी नज्म कर रही हूँ। इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में, इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में, वो चाहता है हमें ये गुमान बाकी है। इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में, वो चाहता है हमें ये गुमान बाकी है। जी जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी बाजी। वैसे भी चूंकि मैं खुद टीचर रही हूँ तो ऐसे इदारों में आके बहुत खुशी होती है, कॉलेजेस में। मक्ता समाप्त कीजिएगा। हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, न वैसा घर है न वो खानदान बाकी है। हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में। चलिए रात के मिजाज के शेर सुनाते हैं। अब तो आप सब पूरी गा देंगे, मुझे पता है। मतलब समाप्त कीजिएगा। तेरा ख्याल मेरी अंजुमन में रहता है, तेरा ख्याल मेरी अंजुमन में रहता है, अजीब फूल है तन्हा चमन में रहता है। तेरा ख्याल मेरी अंजुमन में रहता है, अजीब फूल है तन्हा चमन में रहता है। और मैं उससे दूर भी जाऊं तो किस तरह जाऊं, मैं उससे दूर भी जाऊं तो किस तरह जाऊं, वो इत्र बन के मेरे पैरहन में रहता है। बन के मेरे पैरहन में रहता है। तेरी तलाश में थक जाते हैं कदम लेके, तेरी तलाश में थक जाते हैं कदम लेकिन, सुकून कल्ब भी शामिल थकन में रहता है। तेरी तलाश में थक जाते हैं कदम लेकिन, सुकून कल्ब भी शामिल थकन में रहता है। शेर समाप्त कीजिएगा। ये बात सच है नजरियात जिसके छोटे हो, ये बात सच है नजरियात जिसके छोटे हो, बड़े मकान में भी वो घुटन में रहता है। नजरियात जिसके छोटे हो, बड़े मकान में भी वो घुटन में रहता है। मक्का समाप्त कीजिएगा। वसीम हिंद की मिट्टी में कैसा जादू है मेरा प्यारा वतन हिंदुस्तान, वसीम हिंद की मिट्टी में कैसा जादू है, कहीं भी जाऊं मेरा दिल वतन में रहता है। मेरा दिल वतन में रहता है। सिर्फ एक मतलब दो शेर और सुनाऊंगी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस शेर ने मेरी बड़ी पहचान बनाई है और तकरीबन सभी लोग इसको पसंद करेंगे। मतलब समाप्त कीजिएगा। घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, दिल बड़ा लाखों लोगों को खुशी मिलती है। लेकिन देखिए क्या होता है बच्चों, लहलहाती है मोहब्बत की सुनहरी फसलें, लहलहाती है मोहब्बत की सुनहरी फसलें, दिल की धरती को अगर थोड़ी नमी मिलती है, लहलहाती है मोहब्बत की सुनहरी फसलें, दिल की धरती को अगर थोड़ी नमी मिलती है। और बस एक शेर देखिए आपके दिल तक पहुंचेगा। उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, आपके मतलब जिस जगह पर भी उन्हें गर्द जमी मिलती है, उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं। और वो मक्ता जिसने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वर्ल्ड में मेरी पहचान बनाई है कि मायके जाऊं, तमाम बच्चियों की सबकी नजर है, मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम,
मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका। ये बात सच है, नजरिया जिसके छोटे हों, बड़े मकान में भी वो घुटन में रहता है। बहुत शुक्रिया बच्चों आपके बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग शायरी कहते हैं बहुत गहरी शायरी है, बहुत गहरी शायरी है ना। मैं कहता हूँ कई बार कुछ लोगों से कि वो कोई तो मुंडे पे बैठ जाते हैं, कहते बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, कोई अंदर नहीं गए। दिल के अंदर जाना मतलब अपना मैं खत्म करके जाना, बड़ी बात। अभी पंजाबी के एक मशहूर कवि हमारे बीच में है, मैंने कहा अध्यापक भी है, अध्यापक जो है डॉक्टर कुलदीप सिंह जी। एक उर्दू के शेर के साथ इनको आवाज देता हूँ। मेरी कायनात में नूर ठहर गई, मेरी कायनात में एक नूर ठहर गई, आप जो मुस्कुरा दिए जिंदगी संवर गई। शुक्रिया। जो सब लोग इतने खुश के तालियां मार रहे देख के बहुत खुशी हो रही। एक बार फिर तालियां मार। उर्दू शायरी का लुत्फ मान रही सी, मैंने बहुत उमदा शेर कहे। मैं विद्यार्थी स्टूडेंट दिनों की एक बात आपसे शेयर करता हूँ गजल के रूप में। गजल का मतलब टूट के रिश्ता सादा और सुंदर हो गया, टूट के रिश्ता सादा और सुंदर हो गया, तेनों मंजिल मिल गई, मैं फिर मुसाफिर हो गया। टूट के रिश्ता सादा और सुंदर हो गया, तेनों मंजिल मिल गई, मैं फिर मुसाफिर हो गया। तो ये सुनना के ओटा सी चश्मे जहा सागर जहा लहरा, ओटा सी चश्मे जहा सागर जहा लहरा जहा, रिश्ते आदि जून पैके रेत आकर हो गया, रिश्ते आदि जून पैके रेत आखिर हो गया। एक शेर का नुकसान होगा कि हौली हौली बुझ गई दीवार की किस मोड़ पे, हौली हौली बुझ गई दीवार की किस मोड़ पे, तेरा आसा तेरा खंजर एक बराबर हो गया। हौली 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 बुझ गई दीवार की किस मोड़ पे, तेरा आसा तेरा खंजर एक बराबर हो गया। हाँ खुदी ही प्यास थी बस दो घड़ी के पास, हाँ खुदी ही प्यास थी बस दो घड़ी के वास्ते, दो घड़ियां वास्ते मैं भी समुंदर हो गया। तो हुण लिखो वर्खा में जा करो नदियां तलब, हुण लिखो वर्खा में चिट्ठियां जा करो नदियां तलब, उसने ताब होना सी बंजर वो ता बंजर हो गया, टूट के रिश्ता सादा बहुत सुंदर हो गया।
तेनू मंजिल मिल गई, मैं फिर मुसाफिर हो गया। पत्ते वांगू अखां दे विच डोल रहा, पत्ते वांगू अखां दे विच डोल रहा, एक हंजू थां डिगणे जोगी तोल रहा। पत्ते वांगू अखां दे विच डोल रहा, एक हंजू थां डिगणे जोगी तोल रहा। वरिया मगरों तैनू तकिया क्यों लगदा, वरिया मगरों तैनू तकिया क्यों लगदा, बंद पई पुस्तक दे पन्ने खोल रहे। वरिया मगरों तैनू तकिया क्यों लगदा, बंद पई पुस्तक दे पन्ने खोल रहा। आखिरी शेर है कि चेहरा हाँ मैं हौली हौली पढ़ मैं, चेहरा हाँ मैं हौली हौली पढ़ मैनू, क्यों ऐवें अखबारां वार फरोल रहे। हौली हौली पढ़ मैनू, क्यों ऐवें अखबारां वार फरोल रहा। पत्ते वांगू अखां दे विच डोल रहा, एक हंजू थां डिगणे जो। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पर मेरे सामने जैसे याद की लिखी और हमारे लिए को समाप्त पर कि आपने हमारे लिए गजल पढ़ी, हमारे बच्चों की गजल पढ़ी। मैंने कहा कि टीचर हैं कुछ गहरी बातें करके जाएंगे, तो आपने पता नहीं कितनी उनकी गहरी बातें करती। मैं आवाज देता हूँ साइड अनवर साहब को। मेरे दिल की रात हुई मत, मेरे दिल की रात पूरे मत उसे मुस्कुरा के भगा दे, मेरे दिल की रात पूरे मत मुझे उसे मुस्कुरा के भगा दे, ये चराग फिर भी चरा है कहीं तेरा हाथ जला दे। एक ऐसा टॉपिक है जिससे ये ऐसा टॉपिक है जिससे कोई भी घर खाली नहीं रहा, और अब जब उसको याद कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। 1990 में जब मैं सऊदीया में मुलाजमत करता था, तो वहां से मुझे पाकिस्तान आने की दावत दी गई थी, और जब कराची में मैंने मुशायरा पढ़ा तो वहाँ मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पर जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां एक गजल हुई थी, उसके 2 शेर आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ, समझ समझिएगा। हमारे सजने के टुकड़े हुए जिनके इशारों पर, हमारे सहन के टुकड़े हुए जिनके इशारों पर, चुना है संगे मरमर हमने उनके ही मज़ारों पर, हमारे सहन के टुकड़े हुए जिनके इशारों पर, चुना है संगे मरमर हमने उनके ही मज़ारों पर। हमारी रूह पे किताबे हिजरत लग गया फिर, हमारी रूह पे किताबे हिजरत लग गया फिर। भला होता जो कश्ती छोड़ आते हम किनारों पर, भला होता जो कश्ती छोड़ आते हम किनारों पर। आज आदत तो खुदा मेरे ख्याल आपको देखा अल्लाह साहिब गई थी वहाँ,
संग में हमारे पास बस वहीं से ये कॉन्सेप्ट मिला था और ये गजल हुई। आजाद पे 2 दोहे आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ, उसके बाद ये गजल। और दूसरे दोहे के लिए आपसे खास तवज्जो की दरख्वास्त है। पहला दोहा समाप्त फरमाइएगा। ठंडी ठंडी ओस में शोरों की बुबास, ठंडी ठंडी ओस में शोरों की बुबास, तुम शब्दों मेरी मैं लिखूं ऐसा, तुम शब्दों मेरी हो। सारा जीवन कट गया लिखने में, सारा जीवन कट गया लिखने में ये, धोखा भी एक सीख है शर्मे हिकमत, धोखा भी एक सीख है शर्मे हिकमत पे। गजल के शेर समाज पुरानी बतला करता हूँ। उसकी खुशबू को लफ्जों में ढाले सरा, ऐसा तर्ज़े सुखन और कबयान आइए। उसकी खुशबू को लफ्जों में ढाले सरा, उसकी खुशबू को लफ्जों में ढाले सरा, ऐसा तर्ज़े सुखन और बयान आइए। गीत गाए हवाएं भी हो के मगन, फिर से गुलशन में वो शोखियां लाइए। गीत गाए हवाएं भी हो के मगन, मोगरा मोतिया सौसनो चांदनी, रात रानी चमेली बनफशा कमल। मोगरा मोतिया सौसनो चांदनी, रात रानी चमेली बनफशा कमल। गुलसिता में बहारे हैं दोस्तों, लाइए ढूंढ कर तितलियां लाइए। गुलसिता में बहारे हैं दोस्तों, लाइए ढूंढ कर तितलियां लाइए। पुरसुकून था समंदर तो खामोश थे, ठहरे पानी में क्या बागबां खोलते। पुरसुकून था समंदर तो खामोश थे, ठहरे पानी में क्या बागबां खोलते। आज तुगयानी आई है झूम कर, ना खुदा जरा कश्तियां लाइए। आज तुगयानी आई है झूम कर, ना खुदा जरा कश्तियां लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ नहीं कहूँगा बीच में और आवाज दूंगा। दिल्ली ही नहीं देश भर में अपना मुकाम बना चुकी डॉक्टर लोग अक्सर शायरी को हुस्न और इसके लिए जानते हैं। दिल्ली की एक परंपरा गालिब की परंपरा है। गालिब की परंपरा को हम ये नहीं कह सकते कि वो हुस्न और इसकी शायरी की परंपरा। और अगर मैं प्रोफेसर नामवर सिंह के शब्दों में कहूँ तो हिंदुस्तान में केवल एकमात्र शायर हुए गालिब, और किसी को मानते ही नहीं। इधर जर्नी उसी परंपरा की गई।
इंसान या कविता को बहुत ही क्राइटेरिया में लाने का काम ये बात जरूर करती है। और बहुत अदब के साथ मैंने भी कुछ एक छोटा सा काम इनके लिए किया है, इनकी शायरी आप तक पहुंचाने का काम किया है। पता नहीं कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश, आपने भी मेरा तारुफ को ज्यादा करा दिया। मेरे तो कुछ किस्मत ये है कि मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, माता डिग्री कॉलेज में पढ़ाती हूँ और इससे ज्यादा मेरी कोई खूबी नहीं। टूटे फूटे शेर कहती हूँ, आप लोगों को पसंद आते हैं। और सबसे बड़ी तो मैं मुबारकबाद मैम को, रुपेश जी को और बाकी पूरे स्टाफ को दूंगी कि 3 दिन से हमारा इतना कामयाब प्रोग्राम पार्टीशन पे चल रहा है, जिसको हम भूलते रहते हैं मगर फिर हमें याद करना चाहिए, बार बार याद करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा जख्म है जो कोई नहीं भुला सकता। हमारी गुजरी हुई पीढ़ियां तो गुजर गई, उन्होंने बहुत दुखता है, मगर हमने सिर्फ किताबों में शायरी में इसमें पढ़ा। हमने 3 दिन से जो लेक्चर सुन रहे हैं वो हम शायरी से अलग सुन रहे हैं और उस दर्द को समझ रहे हैं जो हमसे गुजरी, जो हमारे आने वाले बुजुर्गों पे पिछले गुजरी। मगर शायरी में उसको कलमबंद करना एक बहुत बड़ा काम होता है। जो लोकेश ने कहा कि एक छोटा सा हम कवि सम्मेलन मुशायरा रखते हैं जिसमें हम अपने जज्बात को पेश करेंगे कि हमने किस तरह से उसको झेला। तो देखिए 2 लफ्जों में बात कही है, फूल रिश्तों के मोहब्बत के चमन छोड़ गए, फूल रिश्तों के मोहब्बत के चमन छोड़ गए, कितने मजबूर थे जो अपना वतन छोड़ गए। फूल रिश्तों में मोहब्बत के चमन छोड़ गए, कितने मजबूर थे जो अपना वतन छोड़ गए। और देखिए ये शेर सुना करवाएं, मेरे विरसे में न दौलत है न जागीर कोई, मेरे विरसे में न दौलत है न जागीर कोई, मेरे अजदाद जमाने में चलन छोड़ गए। अजदाद का मतलब हमारे है, वो क्या छोड़ के गए, यही छोड़ के गए। और एक शेर और एक छोटी सी गजल और सुना फरमा दें, वो भी पार्टीशन से मुताल्लिक किया है। देखिए, बस्ती बस्ती दिल बंजारा हो सकता था, बस्ती बस्ती दिल बंजारा हो सकता था, बंटवारे का भी निपटारा हो सकता था। बस्ती बस्ती दिल बंजारा हो सकता था, बंटवारे का भी निपटारा हो सकता था। और देखिए शेर समाज फरमाए, इश्क में कोई कैद नहीं है सरहद की, इश्क में कोई कैद नहीं है सरहद की, इश्क का क्या है, इश्क दोबारा हो सकता था। इश्क का क्या है, इश्क दोबारा हो सकता था। और देखिए सारी धरती टुकड़े टुकड़े कर डाली, सारी धरती टुकड़े टुकड़े कर डाली, जख्मों का कैसे बंटवारा हो सकता था। सारी धरती टुकड़े टुकड़े कर डाली, जख्मों का कैसे बंटवारा हो सकता था। और ये भी कोई बात है जीने मरने की, ये भी कोई बात है जीने मरने की, और तुम्हारा काम हमारा हो सकता था। और तुम्हारा काम हमारा हो सकता था। और इसका मतलब देखिए, कश्ती को मझधार में लाकर छोड़ दिया, कश्ती को मझधार में लाकर छोड़ दिया, इस तूफान का कोई किनारा हो सकता था। बच्चे ये कहेंगे कि मैम खुद को तो हमने कभी सुना नहीं स्टेज पे कॉलेज में इस तरह से, तो बच्चों के लिए 2-4 शेर। हसीन ख्वाब की ताबीर भा गई होगी, हसीन ख्वाब की ताबीर भा गई होगी, वो बेवफा है उसे नींद आ गई होगी। हसीन ख्वाब की ताबीर भा गई होगी, वो बेवफा है उसे नींद आ गई होगी। और हवा हो फूल हो खुशबू हो या धुआं तुम हो, हवा हो फूल हो खुशबू हो या धुआं तुम हो, मेरे वजूद में बोलो का मकान तुम हो। आप बच्चों में नजर आइए, इश्क चढ़ता रहा चूड़ी गिरी समझानी को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। मिलती है तुम्हारी सूरत, मेरे महबूब से मिलती है तुम्हारी सूरत, चांद भी छत पे उतर आया है समझाने को।
में जो सुनाऊंगी होता है फिर सुन ले, मौका नहीं मिलता कभी सुनाने का, छोटे छोटे शेर है। इश्क करता रहा तुम्हें यही समझाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, मेरे महबूब से मिलती है तुम्हारी सूरत, मेरे महबूब से मिलती है तुम्हारी सूरत, चांद की छत पे उतर आया है समझाने को। और देखिए, दिलों के जख्म धोना चाहती हूँ, बिल्कुल ताजा गजल, ताजा शेर। दिलों में जख्म धोने चाहती हूँ, तेरी आंखों से रोना चाहती हूँ। तेरी आंखों से रोना चाहती हूँ, और मेरी दरिया दिली समझो तो जाना, मेरी दरिया दिली सोना समझो तो जाना, तुम्हें पाकर मैं खोना चाहती हूँ। परस्ती शब्द की गुप्ती न होगी, जो टूटे वो खिलौना चाहती हूँ। और शेर समाप्त फरमाए, दिलों के मसले हल कैसे होंगे, दिलों के मसले हल कैसे होंगे, मैं दुनिया हूं ना होना चाहती हूँ। और तेरी यादें भी अब देती हैं धोखा, तेरी यादें भी अब देती हैं धोखा, इन्हें पानी में बोना चाहती हूँ। तो दो चार बिखरी बिखरी सी मेरी रात हुई जाती है, बिखरी बिखरी सी मेरी रात हुई जाती है, जिंदगी गर्दिशे हालात हुई जाती है, जिंदगी गर्दिशे हालात हुई जाती है। और मैं से बात करना है, अब तो शायद दरख्तों में सिमट आए हैं, अब तो शायद दरख्तों में सिमट आए हैं, आओ घर लौट चले रात हुई जाती है, लौट चले रात हुई जाती है। और देखिए शेर बच्चों की नजर है, आप मिलके बिछड़ने का बहाना ढूंढे, कोई फिर मिलके बिछड़ने का बहाना ढूंढे, आपसे फिर से मुलाकात हुई जाती है, आपसे फिर से मुलाकात हुई जाती है। और शेर देखिए, गम नहीं कोई मगर अश्क है आंखों से रवा, गम नहीं कोई मगर अश्क है आंखों से रवा, वक्त से पहले ही बरसात
हुई जाती है, वक्त से पहले ही बरसात हुई जाती है। और देखिए बिल्कुल अच्छा शेर है हमारी और आपकी जिंदगी का, समझ फरमाएं। एक चक्कर है मेरे पाँव में रुकता ही नहीं, एक चक्कर है मेरे पाँव में रुकता ही नहीं, यूं ही दिन कटता है और रात हुई जाती है, यूं ही दिन कटता है और रात। और मकसद मत फरमाने, यूं तो हर चाल शरीर कैसे चली है जल्दी, यूं तो हर चाल शरीर कैसे चली है जल्दी, बात क्या है कि मुझे मात हुई जाती है, बात क्या है जो मुझे मात हुई जाती है, बिखरी बिखरी सी मेरी रात हुई जाती है, जिंदगी गर्दिशे हालात। मैं में बंद कर नाम देगी और खाना रहेगी बाकी सारे के लिए। मैंने कहा मैं यहाँ से पहले पढ़ेंगी क्योंकि मैं यहाँ की मेजबान हूँ, इसलिए आप बात पढ़ेंगी। ये बिल्कुल सच है कि सीनियर होते हैं, पिताजी बहुत सीनियर है। हाँ, मैं कुछ इलाका मेवात है राजस्थान का, हरियाणा के बॉर्डर का, उसकी बड़ी जानी मानी तकनीक हमारे बीच में है। मैं उनसे कुछ कहूँगा तो कुछ लोग हैं पढ़े यहाँ पर सत्तर जी में मेवाती का कहा है, पहले हिंदी का दोहा पढ़ता हूँ। मेवाती में हो सकता है थोड़ा सा कम्युनिकेट न कर पाए, पढ़ूंगा फिर भी 4-5 जो है बस, ज्यादा नहीं। तो अकेला जो आदमी रहता है वो बहुत काम का नहीं होता, दुनिया समाज में रहने से बनती है, अकेले रहने से नहीं बनती। ये सार है उसका। रहे अकेला रात दिन, रहे अकेला रात दिन, और इकली उड़े पतंग, और ऐसी गजल रदीफता रहे काफिया तंग। इकला रहे अकेला रात दिन, और इकली उड़े पतंग, और ऐसी गजल रदीफता रहे काफिया तंग। और ये बहुत जो पिछले दिनों मुझे महसूस होता रहा है कि नफरत से दुनिया नहीं बदलती, बड़ा मुश्किल होता है। नफरत बहुत बुरी चीज है। बहुत दिनों के बाद में दिल्ली आया आज, बहुत दिनों के बाद में दिल्ली आया आज, दिल सिमटे सिमटे मिले था नफरत का। बहुत दिनों के बाद में दिल्ली आया आज, दिल सिमटे सिमटे मिले था नफरत का।
तेरी श्वेत कमीज से मेरी अधिक सफेद। ये होड़ पड़ी हुई है कोई आदमी, होड़ से फिर बुद्धि पैदा होती है, आदमी नफरत से भी पैदा होती है। ये नफरत का विज्ञापन होता है, इससे हमें प्यार नहीं होता। तो तेरी श्वेत कमीज से मेरी अधिक सफेद, साम दाम और भेद से, साम दाम और दंड से ज्यादा गहरा थे। एक बुद्धि अगर है तो साम दाम दंड भेद, ये चार हमारे यहाँ बताए, चाणक्य ने बताए कि आदमी खूब खूब डलवा नहीं है तो चार तरह से डलवाओ, शाम से नहीं माने तो पैसे से, और पैसे से नहीं माने तो दंड से, और कुछ नहीं करे तो भेद से, तो नफरत फैला रहा है। तो तेरी श्वेत कमीज से मेरी अधिक सफेद, साम दाम और दंड से ज्यादा गहरा भेद। और देखिए आपके दिल्ली का मामला है कि कैसी होड़ पड़ी हुई है राजनीति में कि तू उस रास्ते पर चल रहा है, मैं भी इस रास्ते पर चलूंगा, तू नफरत के रास्ते पर चल रहा है, मैं ज्यादा कर दूंगा। जैसे आप समझ जाएंगे, पहले समझा था जिसे 2011 के आंदोलन के बाद जो आया, पहले समझा था जिसे होगा यह दमदार, लेकिन निकला नकलची पूरा रंगा दिया। पहले समझा था जिसे होगा यह दमदार, निकला पूरा नकलची पूरा रंगा दिया। ये तो विवादी के दोहे पढ़ता हूँ, बाकी ये तो मुझे खड़ा कर दिया, बाकी मैं तो उसके लिए आया था। देखिए देवानी में हमारे बेटियां जो होती हैं बहुत सुंदर होती है, बहुत, और वो कैसे मतलब गोबर हेल कहते हैं, गोबर को ऊपर ले तो खाती है गाय भैंसों का, तो उसकी सुंदरता का वर्णन इसमें है। जवान बेवनी है जो गोबर खा रही है अपना भैंस का, तब इससे समझ, खुशबू जैसी फैलगी सुंदरता की बेल, खुशबू जैसी फैलगी सुंदरता की बेल, और निकली हरसू गोरड़ी लेके गोबर हेल, निकली हरसू गोरड़ी लेके गोबर हेल, समके पंधन जो चढ़ो तू हो गया निहाल, और जाने भी देखी कभी पनिहारी की चाल। पहले पनिहारी कुएं से पानी भर के लाती थी, और अभी ने हमारे विभाग में कई जगह कुओं से पानी भर के लाती है। तो कुओं से पानी भर के जो जवान लड़कियां लाती हैं, समके पंधन जो चढ़ो तू हो गया निहाल, जाने भी देखी कभी पनिहारी की चाल, सम पैंजनियां बाजती भरती सी आला, और गोरी जाने अपने गैस में रही बिटोरा था। वो भावना जो है, तो ये जो निर्वाची का वो है, वो अलग तरह का एक शिक्षण होता है निर्वाची का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मुझे सुना, बहुत धन्यवाद सर। मैं जिस नाम को पुकारने जा रहा हूँ हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता कि जो पूरा शायरी समझता है वो नहीं जानता होगा। अनादेवी लगभग 20 वर्ष पहले मैंने आपको सुना था जेल के अंदर, लगभग 20 वर्ष पहले 2005-6 के आसपास रहा होगा जेल लखनऊ। तब से लेकर अब तक मैं अनादेवी को कहीं ना कहीं सुनता, चाहे ऑनलाइन सुना हो या कहीं ऑफलाइन सुना हो। इन्होंने उस समय कुछ आसार पढ़े थे, मैं उसी से बुला रहा हूँ। मैं तेरे नाम की तस्वीर पढ़ा करती हूँ, इन्हीं का है। मैं अपनी तरह से पढ़ता हूँ, कुछ एक आध शब्द इधर उधर करूंगा। मैं तेरे नाम की तस्वीर पढ़ा करती हूँ, मुझको दीवाना समझते हैं समझने वाले। अनादेवी जी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, टीवी के चैनल्स पर आप आती हैं, आपका मुशायरे आते हैं, बुलाया जाता है आपको, सब टीवी के कार्यक्रम पर भी आप गए हुए हैं वहां पर। और ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर शायरी या मुशायरे होते हैं जहाँ आप नहीं जाते। अभी 2 दिन पहले भी जयपुर में, सब बड़े देशों में आपकी फरमाइश रहती है। तो मैं एक बार बड़े अदब के साथ अनादेवी जी को बुलाता हूँ कि अनादेवी जी आए और अपना कलाम प्रस्तुत करें। अनादेवी
दोस्तों, साथियों और बच्चियों, आप सबको और मंच पर बैठे हुए सभी मेरे आदरणीय हैं, सभी को आदाब करती हूँ, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बहुत अरसे के बाद, हालांकि मुझे कॉलेज में बहुत जाने का मौका मिलता है, मगर इतनी प्यारी खूबसूरत सी महफिल में आने के लिए मौका बहुत कम मिल पाता है। आप इतनी बड़ी तादाद में बच्चियां बैठी हैं, लड़कियां हमारे सपोर्ट में, ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि इस कॉलेज में मुझे स्कूलिंग का जमाना वो याद आने लगा, कॉलेज याद आने लगा। मुझे मेरी बड़ी वाली इरफत जरी साहिबा, जो बहुत ही मोहतरम, मेरी काबिल एहतराम, मेरी मुझसे बहुत सीनियर है, उन्होंने मुझे यहाँ हुक्म दिया और मैं उन्हीं के बुलावे पे यहाँ पर आई हूँ। मैं उनकी एहसानमंद हूँ कि आप लोगों से मुझसे रूबरू कराया, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। टाइस पर हमारे सदर बैठे हैं और मेहमान बैठे हैं, इनसे इजाजत, अपनी बाजू से इजाजत। मेरे पास कुछ ऐसा तो नहीं है, बस बहुत ही कोमल सी नाजुक सी शायरा हूँ। प्यार मोहब्बत की बात करूंगी, आपकी अपनी बात करूंगी, भारत माँ की बेटी हूँ, भारत माँ की बात करूंगी। मैं अभी तक कई बाहर थी, तो आज आई तो मैंने मैसेज में देखा कि बाजी ने कहा कि पटवारे पे लिखना है, बहुत जरूरी है, तो उनका और मैंने भी कुछ कहा है। आप सभी की मोहब्बतें चाहती हूँ। इजाजत है तो एक बार जोरदार ताली होंगे। हम अब तक सोचते हैं काश बंटवारा नहीं होता, हम अब तक सोचते काश बंटवारा नहीं होता, हमारे मुल्क का माहौल अंगारा नहीं होता, हमारे मुल्क का माहौल अंगारा नहीं होता, न होते एकता में अपनी घर सुराख नफरत के, न होते एकता में अपनी घर सुराख नफरत के, ये बंटवारा दिलों का आज दोबारा नहीं होता। और चार दूसरे इसी में सुन ले, समाप्त कर ले। दुआ है मेरी ये रब से न हो तकसीम रिश्तों की, दुआ है मेरी ये रब से न हो तकसीम रिश्तों की, ये बंटवारे का हम नस्लों के घर वीरान करते हैं, सियासत नाम पर मजहब की दीवारें उठाती है, सियासत नाम पर मजहब की दीवारें उठाती है, अलग हम भाई बहनों को सियासतदान नहीं करता, अलग हम भाई बहनों को सियासतदान नहीं करता। और चार से और समाप्त कर ले, ये बिल्कुल ताजा ही है, मैं इसलिए मुझे देखना भी पड़ रहा है, सुनेगा। चलो ये फैसला कर ले न बाटे से बटेंगे हम, तो सुनिएगा, आप सबकी दुआएं चाहती हूँ। चलो ये फैसला कर ले न बाटे से बटेंगे हम, खुदा के घर जमीन, खुदा के घर जो इस धरती पे है वो सब हमारे हैं, खुदा के घर जो इस धरती पे है वो सब हमारे
चाहती हूँ। बड़ी तादाद में बच्चियां बैठी हैं और ये हमारे सभी बड़े लोग बैठे हैं, तो मैं तो बहुत कम इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सुने, पढ़े लिखे लोगों के बीच में, कभी कभी तो हमें ऐसी जगह में पढ़ने का जाने को मौका मिलता है जहाँ मेले ठेले में, जहाँ गाय भैंसे भी हैं, तो वहां भी जाने को मौका मिल जाता है। मगर यहाँ तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समझाने किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पड़ती है सुविधा। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। की बात किया वहां पर की बात है। अब मैं अपना टैग बदलूं, सुनो। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है, और ये आप पूरी नारी शक्ति को समर्पित, सुनिएगा नजर सुनिएगा। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं। यहाँ डाइस पर मेरी सभी बड़े लोग बैठे, सभी की दुआएं चाहती हूँ, पर बड़े आपकी दुआएं चाहती हूँ। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। चार पंक्तियां और सुने, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं, सुनिएगा। और अगर कहीं हद तक आप तक आपके हृदय में उतर जाए तो एक एक शख्स की तालियां ऐसे आनी चाहिए, मुझे महसूस करा देना, हॉल गूंज जाना चाहिए। सुनिएगा। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नज़र से उतर गया है अना, वो नज़र से उतर गया है अना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। बहुत शुक्रिया, आपको बहुत अच्छा लगा। एक चांद से और मैं दिल कर रहा और सुना सुने। जाहिर से इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि ये यहाँ पर जो शायरी हुई वो हिंदी में भी हुई, उर्दू में भी हुई और पंजाबी में भी हुई, तो यही कौमियत कहती है, यही हमारा देश है जो डाइस में भी है। और पूरे मैं समझती हूँ कॉलेज में लोग, पूरे देश में लोग हिंदुस्तान बैठाएंगे अपने लिए एक बार जोरदार करते हैं। भूल के रंग हवाले कर दूं, भूल के रंग कटरी के हवाले कर दूं, गालिबों हीर को तुलसी के हवाले कर दूं, गालिबों हीर को तुलसी के हवाले कर दूं। आज लोग सुने मेरा रूप सही बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, एहसान है आपका। बहुत खूबसूरत, और चार मिसरे और बनते हैं, और वो इसलिए बनते हैं कि हिंदुस्तान के लिए बात हो रही है, तो आप मेरे लिए तालियां बिल्कुल मत बजाना। आखिरी मिसरे पे, आखिरी लाइन पे अगर आपको लग जाए उस पंक्ति पे आपको तालियां बजाना चाहिए, हाथ खड़े कर देना उस पंक्ति पे। सुनिएगा। हिरन देना सुमन देना चमन देना लगन देना, हिरन देना सुमन देना चमन देना लगन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, अदा देने मेरे को
इतनी अच्छी श्रोता हमें यहाँ मिले हैं आके और आप लोगों ने वाकई में मेरी इज्जत रखी। मैं आपको गजल सुनाऊं या गीत, में दोनों ही पढ़ती हूँ, मगर पहले आप जो आपका बुक वो एक अभी आपके जो संचालन कर रहे थे उन्होंने एक शेर मेरा पढ़ा, ढूंढ ढांड के पता नहीं कहाँ से किस जमाने का मेरे बचपने का शेर पढ़ा। हाँ, अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये उन जमाने में कहाँ सुन के आए थे वो शेर, और उसको तोड़ मरोड़ मत। आप जितना कहेंगे उतना ही होंगे, एक गजल सुनाती हूँ। इन दिनों की बड़ी मशहूर और फेमस मेरी गजल भी है, अभी बिल्कुल ताजा गजल आपके समझ सुना दीजिए। मतलब सुनिए, आप 4 टाइम इसलिए बहुत अच्छे सुन रहे थे, मतलब इसी कशिल मकशिल में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इसी कशिल मकशिल में हमने। अगर गजल अच्छी ना लगे तो आपके दिल की बात मैं वहीं से शुरुआत कर दूंगी। सुने, इसी कशिल मकशिल में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इसी कशिल मकशिल में हमने, इसी कशिल मकशिल में हमने तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो दिए, कभी रो के मुस्कुराए, इसी का। अच्छा, आप लोग खो गए, देखो ऐसे सो के नहीं सुनना है, नहीं तो मेरे पास वो भी है जो मैं आपको सुना सकती हूँ आपके मतलब की बात। मैंने सोचा कुछ अच्छी सी गजल पढ़ दूं, मगर आप तो इतनी खामोशी सुनेंगे तो फिर मैं गजल छोड़ सकती हूँ, दूसरी गजल जाके आपकी मोहब्बत है, आप और अच्छा करिए। मुझे प्यार, मगर मुझे तालियां कमजोर नहीं चाहिए, अच्छी गजल। मेरे तालियों से कुछ बढ़ नहीं जाता है, मगर हमारा हौसला बढ़ रहा है, बस आपकी मोहब्बतें मिल जाती है। मुझे प्यार करने वाली मुझे दिया, मुझे प्यार करने वाली, मुझे प्यार करने वाली, कभी ये चराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए। तुम हो गए तो मुझे लगा बड़े खतरनाक हो गए थे। बहुत शुक्रिया, ये शेर भी खास तौर पर सुने। मैं अकेली रहती रहती किसी रात में जाऊं, बाकी और सिर्फ सुनो, गान जाती बाकी आपकी। मैं अकेली रहती रहती, हेलो भाई, मैं अकेली रहती रहती किसी रोज मर न जाऊं, किसी रोज मर न जाऊं, जिन्हें दिल से चाहती थी
ये बहुत ही खूबसूरत है ड्राइंग चाहती हूँ जो कर रहे थे उनके लिए ड्राइंग चाहती हूँ और हमारी भी सभी ऐसी ये सब की मोहब्बतें चाहती हूँ। हम दोनों ये खड़े हम दोनों जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे हम दोनों जिंदगी के हम दोनों जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे मैं उन्हें न देख पाई वो मुझे न देख पाए बहुत शुक्रिया और गजल में मक्ता आता है जिसमें नाम आता है वो सुनाकर फिर आपसे विदाई चाहती हूँ विदाई की तारीफ से मिलेगा मेरे घर के बाम सुनिएगा मेरे घर के बाम न जाए मेरे घर के बाम मेरे घर के बाम ऐना बदल न जाए ऐना बदल न जाए मैं भटकती फिर रही हूँ मैं भटकती फिर रही हूँ कोई रास्ता दिखाए सलामत रहो और जलकर रहो जीती रहो मेरी दुआएं आप लोगों के साथ बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद। तो शायद एक कवि से शायद 2-2 घंटे सुनाते हैं। हमने तो आपको बहुत कम समय किया। हम अच्छी तरह जानते मैंने मुशायरे सुने हैं और मैं उन लोगों में से हूँ जो प्रार्थना के समय आता हूँ आरती करा कर जाते हूँ। हमारे यहाँ प्रार्थना और आरती का कॉन्सेप्ट मेरा पहले आओ लास्ट पे जाओ बिल्कुल सब पूरा कराता है तो साथ ही लेकर जाओ साथ में। और जो ये टाइम लेकर मैं खड़ा हूँ ना ये करीब पिछले 20 साल पुरानी टाइम है जब मुशायरे में जाने तो हम लिख लेते थे कोई नहीं निकलता है क्या। मैं अभी बड़े अदब के साथ एक हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर मान जी साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित कवि से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी ओर से कुछ कहें कुछ सुनाएं हमें। इनकी कुछ पंक्तियां आज मैंने हिंदी में पढ़ी क्योंकि मुझे पंजाबी तो आती नहीं बिल्कुल भी पढ़ने हिंदी में कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ी आज मुझे से ये मत सोच की हुआ बहुत गहरी पंक्ति है जरा आप लोगों के लिए पंक्ति दिक्कत ये है कि मत सोच की तू अकेली है तू ये देख कि कितनी अलग है ये मत सोच कि तू अकेली है तू ये देख कि कितनी अलग है सबसे दुनिया में जो भी अलग है दुनिया में जो भी अलग है वो अकेला है। बहुत शुक्रिया है और आपको हम सुनना चाहते हैं कुछ समय आप दीजिए पता नहीं
मैं सोचा सी आजादी बारे कोई बात की है, आजादी बारे भी करना होगी, लेकिन जो मैं सोच के है तो आजादी बारे गंदा नहीं होगी। ठीक है, दोस्तों ने एंजॉय किया है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि महफिल जो होती है, जिस महफिल में भी बोलते हैं वो सिर्फ साथी महफिल नहीं होती, वो सारे भी महफिल होते हैं और महफिलों के आगे चला जाए तो कमाल की महफिल कानून ये करना चंगी नहीं लगेंगी, लेकिन जिन्हें लोगों ने वही उठाए देखे उन्होंने पता है किससे खत्म करना, किसको शुरू करना, की पढ़ना गजल किसे पढ़नी है और पूरी कविता जब कविता किसे पढ़नी है। मैं कुछ बहुत भी कुछ कह सकता आगे आगे करोगे पढ़ोगे पढ़ोगे, मैं कह मैं थोड़ा देर बोला था और मेरा मान पूरा दरान कहना है पंजाबी के बीच बहुत सारे लोग कहते हैं यार दाल क्यों नहीं दूंगे, अरे दाल का रुचि करती है जब तुम्हारे अंदर कोई चीज नहीं है वो खोल सकती है, तुम्हारे मांग बेटे कोई चीज ले जाती है उन्होंने तुझे साथ दूसरे हो। एनीवे अब इधर जाना वाले का मैं किसी कुछ परेशान मेरी बच्ची है निकी निकी उसका नाम रिशु है, रिशु के बारे मैं तो कुछ लड़ुआ करूँगा और रिशु ने कितना एंजॉय किया होगा, रिशु बड़ी हो गई है उन्होंने बोले जितना भी तेरे वाले धर्म लिया थी तो वो आप चर्ची है जिस तरह तुम बहुत ऊंची हासिल हो उससे रिशु भी आती है, रिशु बड़ी बुरी है, रिशु बड़ी बुरी है, मेरे से बड़ी ट्रॉफियां थले छोड़ रही है, वरदा हाथ भी लता में टूट जाती है, शायद सोच ली कि तुम्हारे बड़े पापा के भावे नहीं, शायद सोचती है इस उम्र बड़े पापा दिखावे की कहीं तो पिछले फिर होती है उसका पारदर्शी कागज पाड़ती है, शायद सोचती है असल काफी समय एक पर मजा नहीं ना है, पर मजा नहीं भी आएगा क्योंकि जिस वक्त अभी जो खास तरह की चीज सुन रहे हो उसके बाद मजा बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे मैं फिर भी सुनाऊंगा। बुद्ध अवस्था सुती हुई ऋतु अजंता से
पासे बनने लेती बुद्ध की मूर्ति सुती पई यीशु अजंता के पासे बनने लेती बुद्ध की मूर्ति लगती है। पत्नी को कहता वे सिद्धार्थ बुद्ध बन गया, देख सिद्धार्थ बुद्ध बन गया, पर बुद्ध का तुलसी तो हैरानी प्रकट करती है। तो बोलिए बुद्ध तुरंत जाए स्त्री नहीं अवस्था का नाम है। ऋषु ने पाता लिया है तो मेरे लोग जो ऋषु ने पाता लिया किस टाइम हो गया गर्मियों की छुट्टियां महालाल ऋषु भी गई है बराडे शहर। ऋषु बिना पार समझा फोन करना तब मां के कहे कहती है कल आवागी पापा। ऋषु को कल जमाने नहीं होते मैनू तेरे होते हैं कल शायद काल का नाम है सोचा ले जाता ऋषु वड्डी हो गई है पर जो हाथ अतर सामने थी पता नहीं कदों मिलेगी तेरा का नाम काल कुछ दिनों का भी हो सकता है, काल कुछ दिनों का भी हो सकता है, बढ़िया का भी कौन सी रेडी वाली है मां के पिछों रिव्यू बोल रहे कल आवागी पापा। थैंक यू। लीजेंड्स को सुनना अच्छा लगता है, समय होना चाहिए और कभी कभी ऐसी विधा हम लोगों के सामने आ जाती है कि समय नहीं होता, समय अपनी गति से चल रहा होता है। उनकी कविता की सेंटेंस की वो भी एक चुप्पी का दूसरी चुप्पी के साथ संवाद, वो भी एक चुप्पी का दूसरी चुप्पी के साथ संवाद था। ये भी एक चुप्पी का दूसरी चुप्पी से संवाद। उनकी कविता है संवाद, उसकी ये अंतिम 2 पंक्तियां हैं जो मैंने अभी पढ़ी और बहुत शानदार पंक्तियां हैं। शायद ये 2 पंक्तियां अपने आप में महाकाव्य हैं। कर रही डॉक्टर हर्बंस फॉर सकू, डायरेक्टर सिख हिस्ट्री एंड गुरुद्वारा फोरम, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और हमारे इस आयोजन 3 दिन से लगभग चल रहा है। ये एक बड़ा आयोजन जिसको आयोजित करने में कई महीने लगे होंगे हम लोगों को, उसके बारे में भी और इस मुशायरे के बारे में भी आपने बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर कविताएं सुनी, पर मैं ये कहूंगी कि ये कवि बहुत खुशकिस्मत इसलिए कि ये अपनी कविता को नाम दे सके। इन्होंने अपनी कविता को नाम दिया। मैं सिर्फ आपको 4-5 सत्र उन कवियों की सुनानी है जो इतने खुशकिस्मत नहीं थे कि वो अपनी कविता को अपना नाम दे सके। आप समझ गए, जिनकी बात अभी हुई है कि इतने मजबूर थे कि वतन छोड़ गए। जो 3 दिन का ये टॉपिक है, रीथिंकिंग पार्टीशन, बहुत ही डीप, बहुत ही डूंगा शब्द है। इसकी इंटरप्रिटेशन क्यों की जाए कि पार्टीशन में
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। और ये आजादी सिर्फ असी कहिए कि सिर्फ सानू कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके ना मिल गई नहीं, ये इवें नहीं सी। जब महात्मा गांधी जी ने लोक सत्याग्रह किया तां उस वेले दा वारिस आए लॉर्ड इरविन उन्होंने नाल गल करन नूं तैयार नहीं सी कि मोतीलाल नेहरू बीमारी का बहाना करके जेल तो बाहर आए ते चंद्रशेखर आजाद को एक सुनेहा उन्होंने भेजा। उस सुनेहा की सी कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजां अगे गोडे टेक देण नाल साडी आजादी की लहर में बहुत धक्का लगा। पर की साडे देश के नौजवान ये सब कुछ अपने सामने तमाशा देखते रहेंगे? इतना ही कहना काफी कि पंजाब दे विच 6 जिलियां दे हेडक्वार्टर ते इक्को वार मांग कर लाहौर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन हॉल दे विच गवर्नर नु गोली मारी। इस तरीके दियां क्रांतिकारी घटनावां होर भी बहुत जगह पे हुई। ये क्रांतिकारी घटनावां दे होण नाल किसी पासा नहीं पड़दी जेड़ा इवन महात्मा गांधी जी नाल गल करन नूं तैयार नहीं सी, वो महात्मा गांधी नूं स्नेहे भेजण लगा, आओ आओ असीं समझौता करो। ये सी इन्हां लोकां दी देन जिन्हां नूं मजबूर होके अपना वतन छड्डना पै गया, चाहे वो करतार सिंह सराभा होवे, चाहे वो उधम सिंह सनाह होवे, चाहे वो गदर पार्टी ने और गदर पर्चे ने संपादक हो, इन्होंने सारे वतन छड्डने पे। बस इसी के बारे में थानू कुछ सत्र दसना चाहती हाँ, सुनाना चाहती हूँ। और ये वो जो गदर पर्चा सी, क्योंकि आजादी की लहर सी हिंदुस्तान से रहते नहीं रही गई। INN के पैट्रियट्स ने मलाया, सिंगापुर, हांगकांग और जर्मनी, फिर कनाडा, अमेरिका, इस सब जगह पे ये लड़ाई लड़ी। कनाडा और अमेरिका की लड़ाई गदरियां ने लड़ी, जिसको असी गदर मूवमेंट कहते हैं। और ये 1913 को लेकर 17 में ये मूवमेंट फेल हो जाती उस वक्त दियां लिखियां कवितावां जो गदर पर्चे विच लिखियां जांदियां सी, उसके उत्ते कवि अपना नाम नहीं सी लिख सकता, क्योंकि कनाडा विच अंग्रेज राज कर रहे सी। ते कहंदे अपने घरों भज्जे ते देश विच सानू ढोई नहीं और बाहर भी सानू किधरे ढोई, असीं बाहर भी नहीं रह सकते, असीं अपनी दिल की गल नहीं कर सकते। ते करतार सिंह सराभा अक्सर एक कविता पढ़िया करता सी, सेवा देश की जिंदड़ीए बड़ी औखी, सेवा देश की जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखालियां ने, जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां। एक जदों गदर लहर फिर हो गई हिंदुस्तान विच 1917 विच, ते करतार सिंह सराभा, जगत सिंह और हरनाम सिंह टुंडीका ये तीने भज गए सन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बैठिया करतार सिंह सराभा ने गदरियां की एक कविता बोलनी शुरू कर दी। बाजों सिर दित्या ना काम सरना, बाजों सिर दित्या ना काम सरना, युद्ध विच पवेगा जरूर मरना, पाओ ललकार शेरा वांग दर्द के, बड़ी सिर शेरा लेकी जाना पच। इस तरह दी कवितावां जिसके विच इतिहास के रेफरेंस दिते जांदे सी, उठ के करतार सिंह सराभा उठ के खड़े हो गए।
ये कविता बोल ही रहे सर कि अपने साथियों को कहते उठो चलो हिंदुस्तान चलिए असली मुकाबला दूसरे बिना क्यों कर जाए। आपको तो शेरों की औलाद है, गुरु गोविंद सिंह की औलाद जिन्होंने 1.25 लाख से 1 लड़ाए, कवि गोविंद सिंह नाम कहा, उन्होंने औलाद ना चलो वापस चलिए बिना इस गल दे डर दे कि उन्होंने उम्र कैद हो जाएगी, उन्होंने काले पानी की सजा हो जाएगी, उन्होंने फांसी पे चढ़ना पड़ जाएगा। इसकी परवाह किए बिना वो अफगानिस्तान तो आ गए और बड़ी गैरत के नाल फांसियां पे चढ़े, हिंदुस्तान से आके देश की कुर्बानी ले देश की आजादी ले अपना सब कुछ होगा। इन्होंने ये सारा कुछ अपना कनाडा छड़ के हिंदुस्तान में आ गए सिर्फ आजादी। और वो कई बारी ये कवि जेड़ा अपना नाम नहीं देंदे वो की कहते ने कि जदों गदर फर्स्ट क्लास तो लाया कि जदों गदर सफल हो जाए ते किस तरह की सानू गवर्नमेंट मिले कि सरकार सानू मिलेगी पिछों गदर दे मामला माफ सकता रेवेन्यू माफ हो जाना, किसी एग्रीकल्चर के उत्ते रेवेन्यू नहीं देना पड़ना, खेती करन की मौड़ बुखार वाली विद्या बथेरी बढ़ जाएगी आजादी होया कि साडी असली एजुकेशन साडी बहुत होएगी जदों असी आजाद हो गए। किसी ना मजाक फिर सानू अटकाण दी बसे रसे हसेगा ता सारा ही आजाद हिंद हौली जदों होई पंड टैक्स लगान दी होवेगी तरक्की पिछों बहुत ही सुखाली साडी कर लो तैयारी पहला गदर मचान दी। मूर्ख ना कोई होवे सबे विद्वान होन सबे धनवान होन सारे अमीर होन किसे ना चुरान दी किसे चोरी करनी ना पवे। सो इस तरह दियां इन्हां गदरियां दियां कवितावां सन जिन्हां को अपने नाम से पब्लिश नहीं करवा सके क्योंकि डर सी, क्योंकि जब लाला हरदयाल ने गिरफ्तारी दे वारंट जारी हुए गदरियां ने उन्होंने पजाता वो कहते सी सानू लोड़ है तुहाडी, तो इसलिए सानू इन्हां गदरियां की लोड़ सी, इसलिए उन्हां दा नाम गदर पर्चे च नहीं सी दिता जांदा। कहने मैं बहुत कुछ कहना चाहती हां, हिस्ट्री का टॉपिक है पर नाल इमोशनल टॉपिक भी है। अंतला दुखांत में एक बार फिर सानू के दुखांत को भोगना पिया, वो है 1984 का दुखांत। अपनी ही देश से असी के दुखांत को इन्हां लफ्ज़ां नाल मैं क्षमा गुज़ार करती हूं। और प्रसिद्ध पंक्तियों के साथ मैं शायरी को अंजाम देता हूँ। कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए रूप होंगे नई बात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना बड़ी दूर तक रात ही रात हो। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात। जो हमारा पेंडिंग चल रहा है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, पहला प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रंट पर आ जाए और मैं शायद से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नीचे स्थान ले लें। मैं जल्दी से हमने इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने के लिए बहुत कुछ किया, उसी का एक हिस्सा थे कॉम्पिटिशंस। लगभग सभी विभागों ने मिलकर कुछ कॉम्पिटिशंस का आयोजन किया, जिसमें पहला कॉम्पिटिशन था स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन। मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, बच्चे जल्दी जल्दी स्टेज पर आ जाएंगे। श्रेया शुक्ला, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, फर्स्ट पोजीशन, स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन।
इसके अलावा बोर्ड का जो लाइन है जल्दी बोर्ड का मेकिंग कंपटीशन आएगा आगे दैट इज ऑल तनिष कौर ये क्वालिटी कंपटीशन प्रज्ञा बाबूरिया ये प्रोग्राम मान्या जैन ये प्रोग्राम शिवांगी शर्मा ये प्रोग्राम ऐसे कंपटीशन उर्मी शर्मा ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर विष्णुप्रिया ये प्रोग्राम नीलम हिंदी उसी पॉलिटिकल साइंस ऑनर ये सब बच्चे लाइन पर रहेंगे एक लाइन पर और उसके बाद जल्दी जल्दी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट है कि वो मंच पर आए और श्रेया शुक्ला पॉलिटिकल साइंस ग्लोबल आईटी कॉम्पिटिशन फर्स्ट पोजीशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर सेकंड पोजीशन ग्लोबल आईटी कॉम्पिटिशन वो जल्दी जल्दी है शिवांगी शर्मा शिवांगी शर्मा आप चले गए आगे से दूसरे में कॉम्पिटिशन के बच्चे आयशा आगे तासिमा गणेश कौर ये कमेटी हो गया आपके मतलब एक छोटा सा कार्यक्रम बच्चा है 5 मिनट का अभी अपने सीक्वेंस करो सब ये मेन होना है
अभी स्टूडेंट काउंसिल के 2 इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराएंगे। मैं प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करूंगा इन दोनों बच्चों को मेडल पहना कर इनका सम्मान करें। साक्षी सिंह राजपूत, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी स्टूडेंट काउंसिल। एक बार जोरदार तालियां आप इन बच्चों के लिए बजाएं। पेपर प्रेजेंटेशन भी हुए स्टूडेंट्स के। सृष्टि आर्या अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सृष्टि आर्या अम्बेडकर यूनिवर्सिटी फर्स्ट पोजीशन। Came on the bittersweet ending to citizenship in the after partition years. इनका टॉपिक था सृष्टि आर्या अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। सेकंड पोजीशन भाटिया माता सुंदरी कॉलेज। थर्ड पोजीशन सरला शर्मा गांधी कॉलेज। थर्ड पोजीशन सरला शर्मा गांधी कॉलेज। एक और थर्ड पोजीशन पर टाइम हुआ नैन्सी सिंह प्रभात था माता सुंदरी कॉलेज। इसके अलावा 2 पोजीशन टाइप करने रखे। प्लीज आ जाए बच्चे। अदिति वाजपेयी माता सुंदरी कॉलेज, अनिल गौतम माता सुंदरी कॉलेज। इसके अलावा अवार्ड फैकल्टी डेलीगेट पेपर प्रेजेंटेशन। फर्स्ट पोजीशन कुलदीप सिंह, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लॉन्गोवाल संगरूर पंजाब। कुलदीप सिंह उनका पेपर टाइम था नरेटिंग सीलिंग ट्रॉमा ऑफ चिल्ड्रन इन सेलेक्टेड पार्टीशन स्टोरीज। कुलदीप सिंह। सेकंड पोजीशन डॉक्टर स्वर्णजीत कौर लक्ष्मीबाई कॉलेज। थर्ड पोजीशन डॉक्टर एसवीएस झा स्वामी सदानंद कॉलेज। थर्ड पोजीशन प्रोफेसर पूजा जैकी माता सुंदरी कॉलेज। कंसोलेशन प्राइज सलमा वासी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। सलमा वासी। इसके अलावा मैं बहुत नाम ले रहा हूँ, प्लीज आप दर्शन करिएगा। डॉक्टर किरण गर्ग गवर्नमेंट कॉलेज जम्मू कला इस्लामाबाद। डॉक्टर किरण गर्ग। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह हिंदी डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी। नवनीत देगा महाराजा हरिकृष्ण कॉलेज यूनिवर्सिटी देवी। वेदमित्र शुक्ला डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश राजस्थान कॉलेज। देशबंधु कॉलेज। डॉक्टर आसिम सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। डॉक्टर कैलाश पवार यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। डॉक्टर अनिता रानी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। डॉक्टर वर्षा वर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। प्रोफेसर जगमोहन सिंह गवर्नमेंट कॉलेज सहरानी ब्यावा। जसमीत कौर माता सुंदरी कॉलेज। कविता सिंह माता सुंदरी कॉलेज। माता सुंदरी कॉलेज। नीतू शर्मा माता सुंदरी कॉलेज। डॉक्टर रचना कुमार माता सुंदरी कॉलेज। विधि पवार माता सुंदरी कॉलेज। सतबीर सिंह माता सुंदरी कॉलेज। डॉक्टर सिमी कपूर मेहता माता सुंदरी कॉलेज। माता सुंदरी कॉलेज। डॉक्टर मंजना यादव माता सुंदरी कॉलेज। बालवीर दत्ता माता सुंदरी कॉलेज। दीपाली भला माथुर माता सुंदरी कॉलेज। डॉक्टर खुशबू माता सुंदरी कॉलेज। सीमावती राजनीति भक्ति अली बख्शी यूनिवर्सिटी अलवर। मीनाक्षी सिन्हा स्वामी माता सुंदरी कॉलेज। डॉक्टर लक्ष्मी माता सुंदरी कॉलेज। डॉक्टर कल्पना माता सुंदरी कॉलेज। अर्पिता सिंह एमटी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस नोएडा। अनामा खान जामिया मिलिया इस्लामिया। सोनम कुमारी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। टोपिया बानो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। अपूर्वी सिंह माता सुंदरी कॉलेज।
ऋषिका गंगा माता कॉलेज और किरण कौर माता कॉलेज की किसी बच्चे की कोई डिवाइस है शिक्षा प्लीज दे दीजिएगा और किरण कौर माता कॉलेज गुलशन पटेल माता कॉलेज प्रेरणा रावत माता कॉलेज शिवानी शर्मा माता कॉलेज इतनी और माता कॉलेज साइंस बना के रखे मुद्दे की बात है आपके टीचर आपके साथ में जो केवल कनेक्ट किए उनका हौसला तय करते हैं आपके बचाने से नींद नहीं आती उनको गारंटी पकड़ी का नाम निंदा ठीक है गाड़ी बजाने से नींद नहीं आती इसी का नाम है माता कॉलेज से पास आउट है अभी एमए करेंगे मतलब ले लीजिए फर्स्ट पेज के सर्टिफिकेट के नीचे लगी है के लिए एक इंफॉर्मेशन प्रोग्राम कॉलेज करेगा वो